तो फेल गेम फैमिली असैसिन्स क्रीड मिराज के 10वें और आखिरी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और अगर इन केस आपने इसका 1 से लेकर 9 तक कोई भी एपिसोड मिस किया है ना, तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, आपने जो भी एपिसोड मिस किया है उसको पहले देख लो, ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है ना वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो एसी मिराज का लास्ट एपिसोड है ना, बहुत ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है। इनफैक्ट इतना बड़ा एपिसोड मुझे नहीं लगता कि मैंने चैनल पे इतना बड़ा गेम प्ले अभी तक बनाया है। तो अभी मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा ना कि बगदाद की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है उसे जो आदमी कंट्रोल कर रहा है जिसका नाम फाजिल है, उस पे बासिम को शक हो गया है ना कि यही ऑर्डर का मेंबर है। लेकिन सिर्फ शक होने के आधार पे बासिम फाजिल को अभी नहीं मार सकता है। तो बासिम अभी बगदाद की लाइब्रेरी में, जहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है और इसी फंक्शन की वजह से बहुत बड़े राइटर्स और पोएट भी आए इस फंक्शन में। तो अभी सबसे पहला काम है कि फाजिल के खिलाफ प्रूफ जमा करना, और एक बार प्रूफ मिल गया तो फिर बासिम इसको मार सकता है। तो चलो फिर आज के गेम प्ले स्टार्ट करते हैं, और आज के गेम प्ले एंड होते होते तक पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के मेंबर क्यों प्राचीन चीज को निकालना चाह रहे हैं, और इन सब प्राचीन सामान का बासिम से क्या कनेक्शन है, और वो जो जिन नजर आता है बासिम को, ये सब जितने भी राज है वो आज सब सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट गेम प्ले एसी मिराज का। और फेल आर्मी इस वीडियो में बहुत मेहनत लगने वाली है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। एकदम फटाक से वीडियो को लाइक कर लो मेरे भाई, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर स्टार्ट किया जाए। अच्छा, फंक्शन में फाजिल अपना लेक्चर देने वाले हैं, तो उस लेक्चर को अटेंड करना है। देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। कॉलेज में इतने सारे लेक्चर्स मैंने मिस कर दिए, आज मुझे नहीं पता था कि गेम में लेक्चर मुझे अटेंड करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. ये अपने ही खिलाफ प्रूफ दे दे कि ये ऑर्डर का मेंबर है, तो मजा ही आ जाए। Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. अच्छा, लास्ट एपिसोड में ज़ारा और डॉक्टर हसन को नहीं मारा था, तो वही डॉक्टर फाजिल का आदमी उसको बता रहा था और उसको बोला कि आप छुप जाइए, हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। यानी कंफर्म हो गया कि ये भी ऑर्डर का मेंबर है। You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom, the house you led astray. But I will find you, and I will exact justice for every soul you savaged for your great work. अच्छा, डॉक्टर फाजिल जब लेक्चर दे रहा था ना, उसके लेक्चरी से बासिम को समझ में आ गया था कि ये ऑर्डर का मेंबर है। तो ये फाजिल बोल रहा था ना कि आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आपको सुन के बहुत ज्यादा गलत लगेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि भले ही मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, पर मेरा दिमाग अभी भी बहुत ज्यादा तेज है। और ये बताने लगा ना कि विद्वानों ने ऐसा किताब में लिखा है कि हम इंसान इस दुनिया में आए उससे बहुत सदियों पहले जायंट्स हुआ करते थे, और उन जायंट्स ने ऊपर वाले को मानना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ पावरफुल बनाया है ना जो हम इंसानों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। तो फाजिल के इस लेक्चर से समझ में आ गया कि ये भी प्राचीन चीजों को निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि उनकी शक्तियां ये ले सके, और इसलिए बासिम ने अपना खंजर निकाल लिया था, लेकिन मेन टाइम पर आके इसके आदमी ने बचा लिया इसको। तो अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये ऑर्डर का मेंबर है, तो ये ढूंढना है कि ये कहां पे छुपा हुआ है और इसको अभी मारना है। ठीक है। It is true. Fazil leads the order in Abbasiya. I need to hunt him down. तो बासिम का कहना है कि ये बात सच है कि यहाँ पर जो ऑर्डर ग्रुप को लीड कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि फाजिल है, इसलिए अब उसको ढूंढ के मारा जाए, लेकिन पहले पता करना होगा कि वो छुपा कहाँ है। तो चलो पता करते हैं कि कहाँ छुप के बैठा हुआ है।
The old fraud falls out with people hiding. Where is the Kahraman? I wish to complain about the shortness of the lecture. I remain profoundly unedified. Did you see the powerful terror on the How Great Scholar's exciting! You look like What somebody do you about to think get frightened the discovered. Great Scholar? The old How fool must have imagined one of his dimensions. antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. तो इन लोगों की बातों से पता चला है कि इस लाइब्रेरी के नीचे एक खुफिया जगह है, वहां पर फाजिल छुपा हुआ हो सकता है। और इस खुफिया जगह के बारे में छत पर एक माली है, उसने बहुत बार बोला है, तो उससे भी बात करेंगे। ओ, उसी के पास चाबी है। हाँ, लिखा हुआ आ गया है कि जो माली है उसके पास चाबी है, ठीक है, तो उससे चाबी लेकर आते हैं पहले, लेकिन वो है कहाँ? Survey the area, Enkidu. अच्छा, मैं यहाँ लाइब्रेरी के अंदर ना वेपन्स यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर छत पे भी वेपन यूज नहीं कर पाया तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि छत पे बहुत सारे गार्ड्स हैं और छत पे जाए कैसे, कुछ तो पकड़ने का है ही नहीं। अच्छा, ये इसी मिराज में क्या सिस्टम है कि अगर वांटेड लेवल 1 भी है ना, तब भी हर लोग पहचानेंगे कि मैं क्रिमिनल हूँ? ये क्या बात हुई? ऐसे ऊपर चढ़ने के लिए जगह मिल गई मुझे, बस वेपन यूज करना अलाउ कर दिया जाए ना, क्योंकि फिर दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे गार्ड्स है ऊपर। Looks clear. I can use my weapons again if needed. चलो, शुक्र है कि यहाँ पर वेपन यूज कर सकते हैं। देखो, कोशिश यही है कि साइलेंटली सबको मारना है, लेकिन बहुत सारे गार्ड से देखते हैं। Find peace, warrior. अच्छा, अगर आपने एसी वलहला का गेम प्ले देखा है ना, तो उसमें कॉम्बैट बहुत ज्यादा अच्छा है, और एसी मिराज में इसका कॉम्बैट ओके, लेकिन इसका स्टेल्थ ना बहुत अच्छा बनाया है, जो कि वलहला में नहीं था। दो बार सीटी बजाई, गार्ड तो बड़ा सख्त निकला भाई, आया नहीं देखने। अच्छा, उस माली के आसपास भी ना बहुत सारे गार्ड्स हैं, तो आई थिंक उनको भी मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग चाबी तो ऐसे ले जाने देंगे नहीं। एक काम करते, सीटी बजा बजा के सबको बुलाते हैं और एक एक करके मारते हैं। अरे, दोनों तरफ गार्ड से ये दिक्कत है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉम्बैट करना ही पड़ेगा, साइलेंटली यहाँ पर करना मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ गार्ड से एक को भी साइलेंटली मारा तो कोई ना कोई देख ही लेगा। एक और चीज करके देख सकते हो, ऊपर से अगर आएंगे छत पे से चढ़ के, तब शायद कुछ चांस मिले। चलो एक बार करके वो भी देख ही लेते हैं। अच्छा, इन गार्ड्स को फिलहाल मारने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग डायरेक्टली चाबी चुरा के भाग सकते हैं तो वही काम करते हैं। Keep to the roof, I say. Hey, hold on, you! Safer too. Avoid dark hallways, especially after the murder in the library. What's this place coming to? And those screams from the basement. Makes my stomach crawl to hear such pain. अच्छा, ये माली बोल रहा है ना कि छत पे काम करना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि बेसमेंट से ऐसी ऐसी चीख सुनाई देती है ना, वो सुन के मेरी तबीयत खराब हो जाती है। Hey, hold on! I stood there! Wait me! Curse my luck! This key could be useful.
तो ऐसा है कि चाबी तो उठा लिए, लेकिन बेसमेंट कहाँ है अब ये पता करना है। I better not use my weapons here. अच्छा, छत पे जहाँ पे गार्ड्स है वहाँ पे वेपन्स यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे भी कोई गार्ड नहीं है तो वेपन यूज नहीं करना है। तो सामने जो दो क्लूज नजर आ रहे हैं ना, दो आदमी उन दोनों से बात करते हैं, ऑब्वियसली वही दोनों बताएंगे कि बेसमेंट कहाँ है। Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. तो ये फाजिल का आदमी बताने के लिए तैयार नहीं है बेसमेंट के बारे में, लेकिन इसको रिश्वत देते हैं तो शायद ये बताए। Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars. Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. तो फाजिल के साथ ने रिश्वत लेके बता दिया कि हम लोग बेसमेंट कैसे जा सकते हैं, और ये सामने ही दरवाजे से जाना है, लेकिन आदमी खड़ा हुआ है। Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. तो ये गेट कीपर किसी तरह का पासवर्ड मांग रहा है और उसके बाद ही जाने देगा। तो अब मुझे पता करना होगा कि अंदर जाने का पासवर्ड क्या है। Looks clear. I can use my weapons again if needed. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet. We better find Fazl's book or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. तो इन दोनों ने ना फाजिल की किताब बुला दी है, और अगर फाजिल के बेसमेंट में जाना है तो हो सकता है कि ये जो पासवर्ड मुझसे मांग रहा है उसी के बुक में से कोई सेंटेंस हो। इसलिए इन दोनों ने जो बुक भुलाई है फाजिल की, उसको ढूंढना है। अब तो बुक तो ढूंढना ही है, साथ में गार्ड्स की नजरों में भी नहीं आना है, क्योंकि अंदर आना अलाउड नहीं है। ये तो फाजिल की बुक नहीं लग रही, ये सिर्फ पेजेस है, लेकिन देखते हैं फिर भी। तो फाजिल अपनी किताब पढ़ने वाला था कुछ लोगों के सामने, और वही किताब इन लोगों ने भुला दी है। I'll nail bits of you to every one of the city gates. अच्छा, गेट कीपर का सेंटेंस था कि जो लोग पहले आए, तो उसका क्या मतलब, उसके आगे का कुछ और उसको सेंटेंस को पूरा करना है, और वो भी सही तरीके से। That book looks out of place wedged behind a desk like that. A history of the great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom by Fazil Fahim. Not sure if this is the correct volume. तो यहाँ पर भी एक किताब मिली, लेकिन जो किताब हम लोग ढूंढ रहे हैं वो किताब नहीं थी। जाना तो आगे ही है, तो जो यहाँ पे गार्ड्स खड़े हैं पहले उनको मारना होगा। अच्छा, टेंशन मत लेना, लंबा गेम प्ले इसलिए 3 4 5 कॉस्ट्यूम हम लोग चेंज करेंगे। अभी तो मतलब स्टार्ट ही किया है ना। Looks like somebody left a book in the stairwell. अच्छा, फासिल की किताब किसी ने पढ़कर सीढ़ी पर छोड़ दी है, तो गेट का पासवर्ड लेने के लिए जो किताब चाहिए शायद हो सकता है कि वही किताब हो जो सीढ़ी पर है। Wait, what? Damn you! अच्छा, इसी मिराज में सिर्फ तलवार दिया है ना, वलहला में भाई एक्स, भाला, ये सब देता था। पता नहीं इसमें उतने वेपन्स नहीं दिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, इस पे कॉम्बैट पे इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इस गेम को एडवर्टाइज ही किया गया है कि इस गेम में स्टेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि छुप के जितना मिशन कर सको वही ज्यादा अच्छा है। तो फाजिल की किताब नीचे सीढ़ी में रखी हुई है, यानी कि इस फ्लोर के नीचे जाना होगा।
अच्छा, यहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई अनजान आदमी घूम रहा है, बस गार्ड्स को दिक्कत है। Die now! 9 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ये बात तो कंफर्म हो गई कि इसमें वार करने से अच्छा है कि पैरी करो और ऐसे भी जीतोगे फिर तुम ही। This letter mentions a private reading balcony. Might be where the reader has taken the book. अच्छा, वो बुक सीढ़ी से उठा के बालकनी में ले गया है, यानी कि अब बालकनी में देखना होगा। I better not use my weapons here. अच्छा, यहाँ ये लिखा रहा है कि मैं कॉम्बैट कर सकता हूँ, लेकिन बासिम बोल रहा है कि मैं अपना वेपन यूज नहीं करूँ। भाई तय कर लेके करना क्या है। और बालकनी में तो आ गए, लेकिन यहाँ कोई किताब तो नजर ऐसी नहीं आ रही है। इस बालकनी में पूरा छानबीन कर लिया। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट साइड में है। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं नॉर्थ वेस्ट जानता हूँ कि कहाँ है। मेरा नॉर्थ साउथ का भाई बहुत पंगा है, समझ में नहीं आता है मेरे को। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि अगर इस बालकनी में नहीं है तो दूसरी बालकनी में होगा। तो चलो फिर चेक करते हैं दूसरी बालकनी में। Impressive volume, written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Its title is Those Who Came Before Are Those Who Shall Return. This has to be it. I better not use my weapons here. An impressive volume, written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Its title is Those Who Came Before Are Those Who Shall Return. This has to be it. तो बासिम ने एक बात को 2 बार बोल दिया, लेकिन बुक के टाइटल से पासवर्ड पता चल गया है। तो पासवर्ड और बुक का टाइटल ये है कि जो पहले आए थे उन्हें जाना भी पड़ेगा। Again I ask, those who came before are those who shall return. Correct! You may proceed. गेटकीपर ऐसे कितना खड़ूस टाइप से कर रहा था, लेकिन जैसे ही पासवर्ड बता दिया कितना खुश हो गया। ये ऐसे खुश हो रहा है जैसे मैंने केबीसी में 1 करोड़ वाला जवाब दे दिया है। अच्छा, उस फाजिल के असिस्टेंट ने बोला था कि बेसमेंट जाने का रास्ता यहीं से है, और बेसमेंट की चाबी भी चुरा ली है, तो अब हम लोग जा सकते हैं बेसमेंट के अंदर। Looks clear. I can use my weapons again if needed. तो फाजिल के बेसमेंट आ गए जहाँ ये छुप के बैठा हुआ है, लेकिन अब कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा ना जिससे उसे ये नहीं पता चले कि मौत उसके सर पे नाच रही है। Hold on! Hey, turn and face me! Can you stand me? Someone is going to on him to pray for this. Who is? इतना ये लोग जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं ना। धमाके वाले यहाँ पे कंटेनर्स भी थे, उसको भी यूज किया जा सकता था। Yes, you! Hey, die! अच्छा, ये तो अभी बेसमेंट में एंटर किया, अभी अंदर जाएंगे तो पता नहीं और कितने सारे गार्ड्स होंगे। चिल्लाने की आवाज आ रही है। भाई साहब, ये क्या कर रहा है ऐसा? There is a deep wrongness here.
A reek of rotten iron. What have they done to these people? अच्छा, ये फाजिल ना दिमाग के दरवाजे खोलकर दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए ना इन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इन लोगों का बहुत बुरा हाल किया फाजिल ने, लेकिन उसका अब टाइम खत्म होने वाला है। Poor guy will not need this anymore. अच्छा, बासिम भी यही का आदमी बन के जाएगा उसके पास। This should help me blend in. अच्छा, ये पेशेंट का कपड़ा पहने रहेंगे ना तो फाजिल के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो बासिम के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करेगा और एक बार उसके पास पहुंच गया तब उसको मारने में कितना ही देर लगेगा नहीं। और क्योंकि ये पेशेंट का कपड़ा पहन लिया है इसलिए कोई गार्ड भी मेरे ऊपर शक नहीं करेगा। देख रहे हो, ये व्हाइट लाइन जब तक बना हुआ है यानी मेरा भेद नहीं खुलेगा कि मैं कोई असैसिन हूँ। सब सोचेंगे मैं पेशेंट ही हूँ। Take me back there. I don't belong here. Next subject! In here, now! तो पेशेंट समझ के ये गार्ड फाजिल के पास खुद से ले जा रहा है। There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work? Killing my allies and spoiling my lecture. It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be some faction in the Round City. Or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. In here, Lackwit. फाजिल अपने गार्ड से पूछा कि कौन भाड़े का गुंडा आके मेरे दोस्तों को मार रहा है और मेरा लेक्चर खराब करवा रहा है। तो इस गार्ड ने फाजिल को बोला कि ये काम किसी आम गुंडे का नहीं लगता है, ये कोई खतरनाक असैसिन है। ये पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला है, लेकिन ठीक है चलो। I should blend in before it is too late. अच्छा, फाजिल इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करके खुद को प्रूफ करना चाहता है अल बहामुद को, यानी कि वही इसका लीडर है। You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? बासिम से पूछा कि तुम्हें डर लग रहा है क्या एक्सपेरिमेंट से पहले? इसको पता ही नहीं किसके साथ क्या होने वाला है। This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder, and make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance. And upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? फाजिल के कहता था ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बासिम ने बोला नहीं। तो ये पास आया पूछने के लिए कि सबसे बड़ी ताकत क्या है। चलो उसका काम तमाम किया जाए। Justice. इसको मारने के बाद बासिम ने बोला कि इंसाफ सबसे बड़ी ताकत है, समझा? This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness. फासिल बोल रहा था कि शायद यही वो जगह है जहाँ पर ज्ञान का भंडार है, लेकिन मैंने देखा था कि इस जगह पर और ज्यादा रोशनी है। पर बासिम ने बोला कि अंत में तो हम सिर्फ अंधकार ही देखते हैं। ये जिन का क्या चक्कर है, फिर आ गया परेशान करने।
अच्छा, इस फाजिल के जो आदमी थे वो कहाँ चले गए? मतलब एक्सपेरिमेंट हो रहा था इसलिए वो लोग निकल लिए। तो ये जिन का क्या चक्कर है, ये ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स दूसरी दुनिया में क्यों जाना चाहते हैं, प्राचीन चीज ये लोग क्यों निकाल रहे हैं, सब आज के गेम प्ले में पता चलेगा। अच्छा, ये फाजिल एक्सपेरिमेंट करके पता नहीं कौन से रेल्म में भेजता अपने को। मैं चाहता था ना कि फाजिल बासिम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उस रेल्म में भेज दे जहां तो जाके देख सके क्यों जाना चाह रहे हैं सब लोग। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले ही बासिम ने उसको मार दिया। तो बगदाद में ना असैसिन्स क्रीड के 4 ब्यूरो हैं, जिसमें से 3 का काम खत्म कर लिया है, 1 का काम और खत्म करेंगे और वहां पर भी ऑर्डर का एक और मेंबर मिलेगा, तो उसको मारना पड़ेगा। फिर जो ऑर्डर का हेड है उसके बारे में पता चलेगा और शायद वही ये सब रिवील कर सके कि ये लोग क्या 3-5 कर रहे हैं और इन सब चीजों का बासिम से क्या लेना देना है। क्योंकि एक ऑर्डर के मेंबर ने मरने से पहले बोला था, याद है ना, कि बासिम कोई मामूली आदमी नहीं है और ये सिर्फ हिडन वन का मेंबर नहीं बल्कि इससे बहुत ज्यादा है। और मर गया, अच्छा किया उसने, लेकिन पूरी बात बता के मरता तो ज्यादा अच्छा लगता। अच्छा, इसी मिराज में कोई आप व्हीकल यूज मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है। दौड़ के जल्दी में पहुंच जाऊंगा, अभी देखते रहो। ये बोट इतनी स्लो है, ऊंट उससे ज्यादा स्लो है, घोड़ा भी स्लो ही है। तो यहाँ पर जो हिडन वंस का ब्यूरो गार्ड कर रहा है रफीक, उसको जाके सब बताना है कि हाँ फाजिल को मार दिया है। उसके बाद जो चौथा और आखिरी ब्यूरो है वहां चलेंगे। अच्छा, ये जेब काटना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टोकन जानते हो ना, रिश्वत देने के काम आते हैं। Best keep to the shadows. ما مشكلته؟ अच्छा, इस गेम में ये देना चाहिए था कि कितनी जेब मैंने अभी तक काटी, टोटल नंबर्स ऐसे बताना चाहिए था, तो देखते ना पता चलता कि कितने लोगों को भाई लूटा है। जिसकी पॉकेट में जितना ज्यादा कीमती सामान, उसको लूटना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि ब्लू बार देखते हो ना, छोटा होते रहता है और ब्लू बार में जब जाएगा लाइन तभी क्लिक करना है, यानी कि ट्रायंगल दबाना है। उस ब्लू लाइन में जाने से पहले या जाने के बाद अगर मैं ट्रायंगल दबाता हूँ तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैं जेब काटने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ के भी ब्यूरो का काम खत्म हुआ है, रफीक से बात करते हैं, उसको सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। Basim ibn Ishaq. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should not be here. ये निहाल इनगिडू को अपने पास बुला रही थी, भाग गया इनगिडू। Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day. But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, you cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No, it is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. तो अतीत को याद नहीं करना चाहता है बासिम, लेकिन निहाल भी इसका अतीत है पर इसको भूलेगा नहीं है। Now, if you could invent a mechanical rug sweeper, Basim. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib, was she involved?
Not that I know. But we must remain vigilant. तो रफीक को बताया बासिम ने कि देखो काम हो गया है, फाजिली था ऑर्डर का मेंबर और उसको मैंने मार दिया है। तो रफीक पूछने लगे कि डिटेल तो बताओ कि हुआ कैसे। तो बासिम ने बोला कि किसी दिन आराम से बताऊंगा भाई, आज जाने दे। और रफीक को एक पोएट बहुत पसंद है जिसका नाम है अरीब, और वो पोएट भी आई हुई थी फाजिल के लेक्चर में। तो इसलिए रफीक उदास होकर पूछ रहा था कि ये मेरी जो फेवरेट पोएट है वो भी क्या ऑर्डर की मेंबर है। तो बासिम ने बोला कि इस बात के लिए मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कि वो भी इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन हमें चौकन्ने रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो भी इन्वॉल्व हो। और निहाल को यहाँ ब्यूरो के बाहर देखकर बासिम चौंक गया, बोला कि तुमने इस जगह का पता कैसे लगाया? तो निहाल ने बोला कि बस मैंने पीछा किया कि खून के निशान कहाँ जा रहे हैं। मतलब वो ये बोलना चाह रही थी कि बासिम यहाँ पे जो खून कर रहा है इस चीज का बस उसको पता लग गया और उसने ब्यूरो का पता लगा लिया। तो बासिम उसको डांट के बोलने लगे कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी ने देख लिया फिर तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। और इन कीड़ों के बारे में बासिम से निहाल पूछ रही थी कि तुम इससे बात करते हो क्या? तो बासिम ने बोला कि हाँ मैं कभी कभी बात करता हूँ इससे। तो निहाल ने बोला कि तुम तो बात करते हो इससे, लेकिन ये ईगल तुमसे बात नहीं कर सकती, उसके पास कोई जवाब नहीं, मेरे पास है। और निहाल बासिम से पूछने लगी कि उस दिन जो हमने पैलेस में देखा था, यानी कि वो डिवाइस जिसको बासिम ने जब टच किया था तो उसमें से अजीब सी आवाज आने लगी थी और कुछ अजीब विजुअल्स इसको नजर आने लगे थे। तो वही निहाल बोल रही थी कि उस दिन के बाद हम दोनों काफी दूर हो गए, लेकिन तुम उस चीज को कैसे भूल सकते हो? तुम्हें इस बारे में और पता लगाना चाहिए। लेकिन बासिम बोलने लगा कि देखो तुम्हारी तरह मैं नहीं हूँ, मैं अतीत की चीजों को अतीत में रहने देता हूँ, उससे मैं याद करने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो निहाल का कहना था कि अच्छा तुम पास्ट की चीजों को याद नहीं करते हो, तो वो जिन याद है जो तुम्हें सपने में आके सताता था वो भी क्या तुम्हारे अतीत में, वो अब तुम्हें नजर नहीं आता? तो बासिम बोलने लगे कि नहीं, वो अतीत में नहीं है, वो बल्कि अब मेरे साथ यहाँ पर आ गया है। और अब बात इस हद तक आगे बढ़ गई कि दिन में भी मुझे ऐसा लगता है कि उसके पंजे मेरे गर्दन पर है, और ये जिन सिर्फ अब एक बुरा सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है, या फिर ये शायद हमेशा से हकीकत ही था, मुझे ऐसा लगता था कि ये एक बुरा सपना है। तो निहाल ये सब सुन के बोलने लगी कि ये सब चीज तुम्हारी वास्तविकता का एक हिस्सा है। और अपने बारे में बासिम से बोलने लगी कि मैं भी तो तुम्हारी अतीत का एक हिस्सा थी, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे और तुम मुझे अतीत में ही रहने दोगे और याद नहीं करोगे? तो बासिम ने बोला कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, तुम्हें मैं हमेशा याद करूंगा, और भले ही तुम अतीत हो, हाँ, लेकिन तुम हमेशा दोस्त रहोगे। एक तरह से बोलने का मतलब ये था। और अभी हम चौथे और फाइनल ब्यूरो के पास जा रहे हैं जहाँ पर हेड है रेबेका। अच्छा ये रेबेका याद है ना, जब एलिमेंट में ये ट्रेनिंग कर रहा था बासिम, तब इसको तलवार और डैगर बना के रेबेका ही ने दिया था, और वो इसको ये भी बोल रही थी कि तुमको कुछ ज्यादा ही जल्दी मिल गया तलवार और डैगर, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि बासिम अभी तैयार नहीं है इसके लिए। लेकिन इतना टाइम बीत गया तो मुझे लगता है कि उसका भी सोचने का तरीका बदल गया होगा। चल उससे मिलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑर्डर का मेंबर क्या 3-5 कर रहा है। خطر على بالك مغادرة بيتك؟ तो ब्यूरो का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है। Show me the path ahead. अच्छा एक ब्यूरो खत्म करने में 2-2 एपिसोड लगा है, तो सोच लो कि अभी एक ब्यूरो खत्म करना है, फिर जो मेन हेड होगा, जो भी ये ऑर्डर का हेड है, उसको मारने से पहले तो बहुत ही सारे मिशन होंगे, और पता नहीं अभी इतनी सारी राज की जो बातें हैं जो भी हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं वो सब पता चलेगा। तो आई थिंक ये कहानी अभी भी बहुत बची हुई है, कम से कम 3 घंटा तो और अभी भी बचा हुआ है। चलो फिर रेबेका से मिलते हैं और पता करते हैं ये यहाँ पे क्या चल रहा है। Basim, over here. अच्छा मास्टर रोशान भी यहाँ पर है। You seem shorter than I remembered, Basim. And you still have not grown a single digit, Rebecca. No, we're not here as enemies. No, but we never held back on the training ground. Roshan tells me you are local here. In a manner of speaking, I lived here a time before I left for Anbar. This place is no different from the places I'm used to. The rich wipe their shit with the clothes of the poor. That is the Karkh I remember. It is your Karkh no longer. Rebecca has uncovered a district tainted by corruption. Stronger than usual. Rumors of harassment from officials, and goods being controlled and seized. We think someone here has a hold over the district. Let me guess. The Order. A grand auction is happening. The Dairat al-Mal. An annual show of silk robes comparing their golden spoons. No surprise, but this event is invite only. There is a high chance one of our targets will attend. So,
gain entry into the auction and find the one behind this. Mumtaz, you catch on quick. Finding it hard to keep up? There might be clues if we trace trouble to the root. I can show you where they are brewing. Join me outside when you're ready. तो बासिम बता रहा था ना कि अनबार में रहने से पहले वो कुछ टाइम तक कार्क में यानी कि यहाँ पर रहा है और रेबेका बोलने लगी कि ये जगह बिल्कुल वैसी है ना जहाँ पर मैं पहले रहती थी, जहाँ अमीर लोग अपनी गंदगी साफ करते थे गरीबों के कपड़े से। तो बासिम ने बोला कि तुम ठीक बोल रही हो और ये जगह वैसी ही है जैसी मुझे याद थी। तो मास्टर रोशान ने बोला कि बासिम तुम गलत हो, ये जगह वैसी नहीं है जैसी तुम्हें याद थी, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। और फिर रेबेका बताने लगी कि यहाँ के जो ऑफिशियल्स है ना वो लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, उनके सामान छीन ले रहे हैं और इस पूरे कार्क पे ना कोई कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा है। तो बासिम ने बोला कि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो और कोई नहीं बल्कि ऑर्डरी का कोई मेंबर होगा। तो रेबेका ने बोला कि तुम काफी समझदार हो, कुछ ज्यादा ही जल्दी समझ जाते हो। और रेबेका ने ये भी पता लगाया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है जहाँ पर अमीर लोग आएंगे और अपनी अमीरियत को एक तरह से कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा अमीर है। लेकिन इस ऑक्शन में जाने के लिए ना इन्विटेशन की जरूरत है। तो बासिम ने बोला कि ठीक है, मैं इन्विटेशन का बंदोबस्त करके इस ऑक्शन में जाता हूँ और पता करता हूँ कि इन सब के पीछे कौन है, यानी कि जो भी ऑर्डर का मेंबर है वहीं पे मिलेगा। और अभी जाना है मास्टर रोशान के साथ ये देखने के लिए कि 3-5 वाले काम कहाँ पर हो रहे हैं। Master, are you ready, Basim? Karkh awaits. Ready. Let us move. Follow me. Ever thought you would return here? To Karkh? No. Much of my childhood was spent along these streets. Finding friendship with rats and roaches. Some memories are good. Most are bitter. Memories only serve to distract us. The Order has spread their influence into every crack in the city, turning Baghdad into their farm. That will change. Responsibility lies heavy on our shoulders. The Order's blight falls over Karkh, and we are the only ones who can cure it. How has Rebecca been adjusting to Karkh? She does not like the politics, but she has to fulfill her duty. Karkh is an acquired taste. Businesses at each other's throats. The obsession over money. Perfume. People here are happy to be lost in their own paradise. A paradise that can only be afforded by the wealthy, and often corrupted. तो बासिम से मास्टर रोशान पूछ रही थी, तुमने कभी सोचा था कि तुम अपने पुराने घर कार्क में वापस लौटोगे? तो बासिम बताने लगी कैसे यहाँ पर वो सड़कों पे चूहों और कॉकरोचों से दोस्ती करने की कोशिश करता था और बता रहा था कि कुछ यादें इसकी अच्छी हैं और कुछ बहुत ही बुरी। तो मास्टर रोशान ने बोला कि यादों का काम रहता है सिर्फ हमारा ध्यान भटकाना, और ये ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स की पहुंच पूरे बगदाद में हो गई है और ऑर्डर ने अपने गलत कामों का खेत बना लिया है बगदाद को। अच्छा, इसको पहले लूटने दो। You drift too far. तो मास्टर रोशान का कहना था कि हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है क्योंकि इस ऑर्डर को जड़ से उखाड़ना है बगदाद से, और कार्क में सिर्फ वही लोग मजे कर रहे हैं जिनके पास पैसे हैं या फिर वो भ्रष्ट हैं। तो सारे गलत काम कहाँ चल रहे हैं मास्टर रोशान अब दिखाएंगी। Come, we're nearly there. अच्छा, मास्टर रोशान और रेबेका की बातों से पता चल गया है ना कि कार्क में बिजनेस बहुत ज्यादा होता है और किसी ऑर्डर के मेंबर के कहने पर यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उनसे पैसे छीने जा रहे हैं और उनका सामान भी छीन लिया जा रहा है। तो पता करना है क्यों। Welcome back to Karkh. Spice still clings to the air. बासिम को बाजार से मसालों की महक आ रही है। What was it like? The first time you took a life? I barely recall. It was a man I used to know well. Before all of this. Before the Hidden Ones. You do not remember? My memories are buried next to him. I refuse to let his death hunt me. The way his breath hunted me when he was alive. I won't let the past define me. This is why I now consider myself the daughter of no one. If we do not quell the storm within us while awake, it takes us in our dreams. Like with you and your jinni. Now, the souk. Like Rebecca said, some guards came through recently, breaking bottles, smashing crates. What caused this aggression? Let's find out. I've also heard they're seizing foreign goods, mostly from the East Road. The East Road? I believe I know someone who can help.
It has been an age. Hopefully he is still around. I would be happy to see him again. Do not let nostalgia cloud reality, Basim. I will not. I know nothing stays the same. तो यहाँ पर बैसिम किसी को जानता है, उससे मिलेंगे तो शायद कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन पता चलेगी गार्ड्स यहाँ पे सबका सामान क्यों छीन रहे हैं. It has been some time. I wonder what has changed around here. Maybe I could first pay an old friend a visit. तो मास्टर रोशान से बैसिम पूछ रहा था कि जब फर्स्ट आपने किसी की जान ली थी तो आपको याद है कैसा लगा था उस टाइम. तो मास्टर रोशान ने बोला कि जब मैंने फर्स्ट किसी की जान ली थी तो तब मैं उस टाइम हिडन वन नहीं बनी थी और इन सब बातों से बहुत पहले की बात है और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि उसको मार के मुझे कैसा लगा था. तो बैसिम पूछने लगे कि आपको याद नहीं? बिल्कुल भी. मास्टर रोशान ने बोला कि मेरी यादें ना उसी की लाश के साथ उसके बगल में दफन है, क्योंकि मैंने पास में जो भी किया है, जो भी मेरे साथ हुआ है उसको मैं याद नहीं करती और इसलिए मैं अब खुद के बारे में सोचती हूँ कि मैं किसी की भी बेटी नहीं. और जो तूफान हमारे मन में उठ रहा है ना, अगर हम होश में रहकर उसको काबू नहीं न करते हैं तो वो तूफान हमें सपने में बहा ले जाता है, जैसे तुम्हारे साथ होता है जब तुम सोते हो और तुम्हें वो जिनी सताता है. तो मास्टर रोशान के कहने का मतलब है कि बैसिम बहुत ज्यादा सोचता है इन सब बारे में और इसी वजह से ये जिन इसको सताता है सपने में. लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और बात है, मास्टर रोशान को नहीं पता है. तो ये सब बात तो ठीक है, लेकिन रेबेका ने बताया था कि गार्ड्स यहाँ पर आके तोड़ फोड़ मचाने लगे और मास्टर रोशान ने ये भी सुना है ना कि बाहर देश से जो सामान आ रहे थे ना उनको भी गार्ड्स ने छीन के रख लिया है. तो अभी पहले यहाँ पे पता करना है कि गार्ड्स तोड़ फोड़ क्यों मचा रहे हैं. Trust me, my rogues from Tooth are the best in Baghdad. I will even give you لم يكن وزن بعض على أي حال. رأيت أجمل. तो बगदाद की लाइब्रेरी में जाने के बाद अब एक बड़े से बाजार में भी आ गए. तो यहाँ पर जो भी क्लूज है सबको इन्वेस्टिगेट करना है एक एक करके. She's done for. She should have paid them off the first time they threatened her. Do you blame her? I find myself only scraping by with this new tax on our stalls. Business is not easy. तो इन लोगों की बातों से पता चला कि ऑफिशियल्स ने ना सारी दुकान पे टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिया है और ये लोग बोल रहे थे कि वो लड़की तो काम से गई, उसे पहले ही टैक्स दे देना चाहिए था. तो इन गार्ड्स ने जहाँ जहाँ तोड़फोड़ मचाई है ना, सबसे चल के बात करते हैं. broken, completely destroyed. Those guards, they know no mercy. This is nothing. Do you know what they are doing to the perfume merchant? तो इन लोगों ने शायद टैक्स नहीं भरा इसलिए गार्ड्स ने इनकी दुकान तोड़ दी है. तो लोग बोल रहे थे कि गार्ड्स के दिल में जरा सा भी रहम नहीं है, इन्होंने मेरी दुकान का क्या हल किया. तो इस दुकानदार को कोई बोलता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो गार्ड्स परफ्यूम के दुकानदार के साथ क्या कर रहे हैं ये जाकर देखो. I just need more time. This is taking too long. I have somewhere to be. And this is hardly worth the coin they pay me. Cut off a finger. Maybe that will loosen her coin purse. This does not concern you. Oh, wait. This is bad. Oh, thank the deities. And thank you. Thank you, Saeed. What did you do to incur such aggression from the guards? I did nothing. I'm only short of coin. Business is business, but I do not have the means to pay their tax. Are your wares moving slow? No, but in recent times, they have increased the coin requested. Therein lies the trouble. Not just for you, but for others as well. Mostly for people like us who are not from here, or not of the same faith. We find it's hard to feel safe in Kah. I have a shipment that's late. I fear my goods and camels might have been seized by the guards. They should have arrived with some merchants bound for the Dairat Amal. If I could ask a favor, my friend, please look for them. Very well. They should be along the road that leads to the south gate of Baghdad. Ah, I might catch them at the watering hole along the southern road. Thank you, Saidi. The road beyond the south of Baghdad. I should see if I can find those stranded merchants.
तो परफ्यूम दुकान की मालकिन को बचाने के बाद बासिम पूछने लगा कि तुमने ऐसा क्या किया था, जो गार्ड्स तुम्हारी उंगलियां काटने वाले थे। तो उनका कहना था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए तो मेरे सामान तो उतने ही बिक रहे हैं, लेकिन क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया तो और पैसे मैं कैसे दूंगी। तो बासिम बोले कि ये दिक्कत तो बाजार में सबके साथ होनी चाहिए ना, क्योंकि टैक्स सबके लिए उतने ही बढ़े हैं। तो ये बताने लगी कि मेरे जैसे जो बाहर देश से लोग आए ना, उनके लिए ज्यादा दिक्कत है। और इन्होंने बासिम से एक मदद मांगी कि मेरा कुछ शिपमेंट आने वाला था और मुझे ऐसा लगता है कि गार्ड्स ने उस शिपमेंट को रोक दिया होगा, तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अगर तुम मेरी प्लीज मदद कर सको तो जो लोग मेरा सामान लेके आ रहे हैं ना, उनको जाकर एक बार चेक कर लो कि वो लोग कहाँ पर अटक गए। तो इसलिए बासिम जा रहा है ये देखने के लिए कि जो मर्चेंट सामान लेके आ रहे थे वो लोग कहाँ अटके हुए हैं। چرا حواست رو جمع نمی‌کنی؟ तो वो जो मर्चेंट्स आ रहे हैं ना, उन तक ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। काफी लंबा रास्ता था। The merchants should be down this road, perhaps near a ridge for shelter. अच्छा, इन कीडू से पता लगाना है कि वो मर्चेंट्स कहाँ पर हैं, ठीक है? Nothing can hide from us, Enkidu. That camp must be where the merchants are. तो मर्चेंट्स यहाँ पर कैंप लगा के बैठे हुए हैं, चलो उनसे बात करते हैं। Halt! Halt! Who goes? Assalamu alaikum. I was sent by a friend of yours who was worried for your safety. As you can tell from the horse's head, she was right to be. We do not know what to make of this. Let me help. Perhaps I can find out what happened. We would be grateful. The culprit must have left a clue. अच्छा, इस मर्चेंट के घोड़े को किसी ने मार दिया ताकि ये लोग डर के वापस चले जाएं यहाँ से। This is a work of intimidation. Someone is trying to prevent your arrival. La. Who? Who would do such a thing? I have no enemies, no bad blood. There could be worse fates if you continue down the road. Let me escort your crew to the gates. You would do that for us? Shukran. God bless you. Quickly, get us away from here. तो बासिम इनको बताने लगे कि देखो, तुम्हारे घोड़े को किसी ने मारा है तुमको डराने के लिए, ताकि तुम यहाँ से लौट जाओ। और यहाँ से अगर तुम्हारा क्रू आगे जाता है ना, तो और भी बुरा हो सकता है तुम लोग साथ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो ये जो सारे मर्चेंट्स हैं ना, इनको सेफली ले जाना है कार्क तक, ठीक है? चलो। Let us move. The city is not too far. Come, we should leave this place quickly. Should have stayed home. Where is home? I come from a place called Greece, west from here across the water. With my horse Legume, we carried goods to and from Baghdad. Oh, the cities we visited. Al-Quds, Basra, and even Samarra. तो मर्चेंट बता रहे हैं कि ये बाहर ग्रीस से आए और कहाँ-कहाँ अपना सामान सप्लाई करते हैं। Your merchant friend tells me that these goods are bound for the Da'irat al-Mal. Nay, the great auction is a big event, and that meant bigger demands. So you are attending then? Attending? I only wish I had the coin to spend. No, we are just providing stock for the preparations. अच्छा, ये मर्चेंट सारा सामान लेके आ रहे हैं ना उसी ऑक्शन के लिए जहाँ पर वो ऑर्डर का मेंबर भी आने वाला है। और ये लोग उस ऑक्शन में नहीं जा रहे, वरना इनके साथ बासिम भी चला जाता, क्योंकि वहाँ जाने के लिए इनविटेशन चाहिए। Who sent you? You cannot run or hide. To enter Baghdad, you have to pay the price. What the hell is going on? I will kill you. तो इन मर्चेंट्स को मारने का ऑर्डर ना किसी अल अनका ने दिया, और ऐसा नाम तो ऑर्डर ही के मेंबर का होता है। The guards report to someone called Al-Hanka. This confirms my suspicions. तो इन मर्चेंट्स को ये अलनका इसलिए मरवाना चाहता है ना, क्योंकि इनमें से कोई एक जानता है कि अलनका कहाँ मिलेगा। तो हो सकता है कि वो बताए अपने को, लेकिन पहले इनको सेफली ले जाना होगा। Good heavens! Could they have been sent to kill us? Likely. This is not surprising. We've been vocal against the Khilafah and unfair taxes. It can cost us our heads. But the silent sheep is an ally to corruption. They do not like this opposition. I would not be surprised if they made an example out of us to others who might try the same. तो इस मर्चेंट का कहना है कि खलीफा ने जो अचानक से ऐसे टैक्स बढ़ा दिया, इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, और इसलिए खलीफा में मार के एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो इस टैक्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे। Baghdad, you are safer now. You Do not embarrass yourself.
thank you. इनको लग रहा है कि खलीफा इनको मरवाना चाहता है, जबकि कोई अलन का इनको मरवाना चाहता है। Here we are. 1,000 thanks, Ya Sayyidi. Baghdad is not safe. Rumors swirl through the markets of merchants dragged from their stalls. Have you heard of such injustice? Who would do this? Rumors say they target the Dhimmiyun, traders who are not from here. The Abbasids want a stake in all businesses. As long as there is coin, lives are secondary. The note dropped by the guards was from someone called Al-Anqa. This person is the one behind the attack. I overheard the guards refer to the tax collector as Al-Anqa, which was odd. Because, is the Anqa not female? Tell me his name and where I can find him. Sohail lives in a mansion west of Karkh. Be careful, friend. I doubt he works alone. Thank you, friend. Wafaqak Allah. तो ये मर्चेंट थैंक यू बोल रहे थे बासिम को यहाँ तक सेफली पहुंचाने के लिए, और ये बोल रहे थे कि मैंने सुना है कि बगदाद अब सेफ नहीं है क्योंकि दुकान से लोगों को निकाल के मारा जा रहा है। और ये बोलने लगे कि मेरी तरह जो बाहर देश से आए ना, उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। और इस मर्चेंट ने बताया कि ये जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि अलन का ही है, और इसका असली नाम सुहेल है। और इन्होंने बताया कि वो कहाँ रहता है, और इन्होंने बासिम को बोला कि थोड़ा संभल के जाना है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अकेले काम कर रहा है, और अब इसके घर पे जाके इसको मारना है। Left a nasty scar. ذلك الكتاب الذي أعرتني إياه في الماضي. لكني أعتقد أن العقاب كان قاسيا. सुहेल के घर ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। The tax collector is due a visit. अच्छा, पहले तो ये खोजना होगा कि ये सुहेल छुपा हुआ कहाँ है। अच्छा, ज्यादा चाहिए कि जो तगड़े वाले गार्ड से ना पहले ही उनको लपेट के रखो। अच्छा, इस टैक्स कलेक्टर को हम लोग ऐसे तो ढूंढ नहीं पाएंगे, जब तक ये गार्ड्स खड़े हुए हैं ना, तो इनको एक एक करके मारना ही होगा। What see you, my friend? They are vigilant. Best not go now, Enkidu. इनकीडू आराम से खोज के दे देता कि सुहेल कहाँ पे छुपा हुआ है, लेकिन नहीं, ये जो निशानची है ना, तो अब दो ही ऑप्शन है, या तो वो निशानची को मारने के बाद इनकीडू को उड़ाऊं या खुद से जाके चेक करूं। तो वो जो निशानची है ना, उसके पास ही चलते हैं पहले। अच्छा, वो निशानची दिख गया है। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, रुक जा, तू वेट कर।
help, my friend. अच्छा, इस निशानची को तो मार दिया, लेकिन इनकिडो भी पता नहीं लगा पा रहा है कि सुहेल कहां पर है। अच्छा, इस रूम के अंदर जो आदमी है ना, वो गार्ड टाइप का नहीं लग रहा है। यही है क्या सुहेल? पर इस रूम के अंदर जाना होगा ना उसके लिए। हाँ, यही लग रहा है, पक्का यही है। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन इस रूम में घुसने का बंदोबस्त करना पड़ेगा पहले। अच्छा, लगता है कि ये टैक्स कलेक्टर भी जानता था कि इतने इतने जो गार्ड्स रखे हुए हैं सब निठल्ले हैं, इसलिए भाई साहब ने गार्ड्स के होने के बाद भी अपना रूम बंद करके रखा हुआ है। और यहाँ तक का गेम प्ले खेलने के बाद और आप लोग देखने के बाद ये तो समझ गए होंगे कि एक जगह से दरवाजा बंद है तो कहीं और से खुला होगा। इसने कम से कम 30-40 गार्ड्स रखे होंगे, ये सोच कर कि ये लोग मुझे बचाएंगे। अच्छा, दोनों तरफ से दरवाजा बंद है और यहाँ खोलने के लिए चाबी चाहिए। हो सकता है कि किसी गार्ड के पास चाबी हो। Here, dog! Nice work. Don't get cocky. All right, I dare you! अच्छा, इतनी थे या और भी कोई आ रहा है? क्योंकि एक एक करके आते हैं ये लोग मरने के लिए। इसके इस घर में ना 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा इसने अंदर से बंद किया हुआ है और दूसरे दरवाजे की चाबी चाहिए अपने को कम से कम। I need your eyes, my friend. अच्छा, जिस गार्ड के पास चाबी है ना, वो दिख गया है। अकेला अकेला देखो यहाँ पर देख रहा है। सारी लाशों को चेक कर रहा है बेचारा। चलो उसको भी लाश बना देते हैं। इतना क्लियर सिटी बजा रहा है बासिम, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको जा ही के मारते हैं। अच्छा, बाहर में पता नहीं कौन लोग खड़े हुए थे, उनको भी मैंने खंजर फेंक के मार दिया। जरूरत थी नहीं, लेकिन कोई नहीं, अपने को चाबी मिल गई। ये वाला दरवाजा लेकिन अंदर से बंद था ना, ये तो नहीं खुलेगा। अच्छा, इसके नीचे जो दरवाजा है ना, अरे माँ कसम, जिन लोगों को मारा था शायद वो लोग आ गए। That's a good one! Stomp you out! When I start the horse on, blood will flow! I've got all. Someone is going to pray for. अच्छा, ये कुछ ज्यादा ही रियल बना दिया है कि स्मोक बॉम्ब को ना पानी में नहीं फोड़ सकते हैं। ये पता नहीं अभी ऐसा हुआ है या ऐसा ही है, क्योंकि अभी देखा ना, फोड़ने जा रहा था तो फूटा नहीं स्मोक बॉम्ब पानी में। तो चलो फिर, चाबी तो मिली गई है, टैक्स कलेक्टर को चल के मारा जाए। They should be back with the coin. My head will lower it within. How hard is it to keep the coin from forward? Orders to increase taxes. India, More coin China. trickling into their hands. There might be more information I can find around their here. own kind. The taxes have been paid.
बासिम ने एक तो इसको मार भी दिया, मारने के बाद बोलता है कि सारे टैक्सेस अब पेड हो गए। तो उस मर्चेंट ने भी ठीक बोला था कि ये सुहेल अकेला काम नहीं कर रहा है, इसको टैक्स बढ़ाने का ऑर्डर किसी और से मिला है। The tax collector does not work alone. Someone not from Baghdad controls the strings. There is a scent on the letter. Perfume. Rose with iron. तो सुहेल को जिसने टैक्स बढ़ाने का ऑर्डर दिया था वो यहाँ बगदाद का नहीं है, वो कहीं और का है। और बासिम को लेटर में से परफ्यूम की खुशबू आ रही है और इस परफ्यूम में गुलाब और आयन मिला हुआ है। और अभी इसके मैंशन में ना और भी क्लूज ढूंढना होगा जिससे ये पता चल सके कि ये किसके ऑर्डर पे काम कर रहा था। अच्छा, इतने सिक्के इसके टेबल पे रखे हुए थे, सारे टैक्स जो मिलते थे यही रख लेता था क्या? नीचे एक लेटर तो नजर आ रहा है लेकिन नीचे कहाँ, मतलब इस घर के नीचे है। अच्छा, आधी रात में आया था इसको मारने के लिए, मारते मारते सुबह भी हो गई। वाह। यहाँ इन्वेस्टिगेशन में ना सिर्फ एक क्लू मिसिंग है और वो एक लेटर मुझे नजर आ रहा है लेकिन वो कहाँ है? एक खजाने का बॉक्स भी दिख रहा है लेकिन ये जो लेटर है ये कहाँ, मतलब बहुत ही नीचे दिख रहा है कहीं। चलो यहाँ से चल के देखते हैं। The blockade at the harbor is funded by the coin of the people. I am done here. Now to look into the other lead. अच्छा, कार्क के लोगों से टैक्स लेकर ना बंदरगाह को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो जो भी यहाँ का काम खत्म हुआ है फिलहाल इन लोगों से पहले भागते हैं और उसके बाद बासिम का एक यहाँ पर दोस्त है, वो बता सकता है कि जो बाहर से सामान आ रहे हैं बाहर देश से, उनको गार्ड्स क्यों छीन रहे हैं। तो इसलिए बासिम का जो भी पुराना दोस्त है, अगर उसे बासिम याद होगा तो चलो उससे भी मिलते हैं चलकर। अच्छा, ये वाले ब्यूरो का पूरा एक मिशन कंप्लीट हो गया और एक जो बासिम का दोस्त वाला मिशन है ना, इसको खत्म करने के बाद कार्क में जो ऑर्डर का मेंबर है ना वो रिवील हो जाएगा और उसको मारने के बाद ऑर्डर का जो हेड है, जो आई थिंक मेन बॉस होगा, वो भी रिवील हो जाएगा या फिर उसको रिवील करना पड़ेगा। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, फिलहाल बासिम का जो पुराना दोस्त है उससे बात करते हैं। Guys, you reported my crate of... अच्छा, शायद यही है बासिम का दोस्त। What fresh brew do you have for me today, Kong? No brew until Luca returns my crate. But if you have come to buy tea, I have many recommendations. Kong, it is me, Basim. Huh? 你是谁啊? Who? Basim. I am not an idiot. Everyone claims to be someone I know. Answer me this. What tea did my Basim like? Ginger with some turmeric. Wrong! Basim does not like tea. Wow, Basim! Little Finch, look at you all dressed up. Come, come, follow me to my stall. Away from this terrible man. अच्छा, ये बासिम का दोस्त कॉन्ग उसको तुरंत ही पहचान गया था लेकिन थोड़ा नाटक कर रहा था उसको नहीं पहचानने का। तो कॉन्ग ने मजे तो ले लिए, बस अब कुछ काम की इंफॉर्मेशन दे दे। So, Little Finch, what have you been up to, huh? So many years. Just here and there. I had to leave Baghdad for a while. Ah, youth. What about yourself, Kong? What have you been doing these years? Doing what I do best, making coin. Although with some difficulty of late. The guards are on high alert,
and that Greek merchant has taken it in his stride to report me at every chance. I know it in my ripe old bones that he waits for me to die of starvation, or worse, go out of business. Ah, but here you are, little Finch. Remember the dazzling duo we used to be? How about helping a friend out for old times? Ah, just like old times. But I need to speak with you after this. There is something I need as well. Of course! After you fetch my confiscated crate of beautiful leaves. It must be over there, where the guards are. Go forth! Fine. But I have something to ask of you after this. Yes, of course. तो ये कॉन्ग बता रहा था कि आजकल बिजनेस बहुत ही खराब चल रहा है क्योंकि गार्ड्स बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे हैं। और मेरे साथ वो जो ग्रीक दुकानदार था ना, उसने तो ऐसा ठान लिया है कि वो मेरी बैंड बजा के रहेगा। उसे जब मौका मिलता है मेरे बारे में जाके गार्ड्स को रिपोर्ट कर देता है। वो चाहता है कि या तो मैं भूख से मर जाऊं या फिर मेरा बिजनेस ही बंद हो जाए। Don't want you here. तो कॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन पहले उसकी मदद करनी पड़ेगी। Show me everything. अच्छा, ये कॉन्ग याद दिला रहा था बासिम को कि याद है जब तुम बच्चे थे तब हम दोनों कितना अच्छा टीम बना के काम करते थे। तो वही पुराने दिन याद करके तुम मेरी अभी भी थोड़ी मदद कर दो। और गार्ड्स ने मेरी चाय की पत्ती जब्त कर ली, उसको तुम ला कर दे दो, फिर तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं दूंगा। तो इस कॉन्ग से अगर कोई काम की बात जाननी है तो पहले इसकी चाय की पत्ती ला कर देनी होगी। अच्छा, अंदर ना एक धमाके वाला कंटेनर, उसको अगर फोड़ देता हूँ तो सारे गार्ड्स वहां चेक करने आ जाएंगे और तब फिर यहाँ पर छानबीन कर सकते हैं कि चाय की पत्ती कहाँ रखी है इन लोगों ने। Hold on. Now you मैं समझ गया, ये गार्ड्स बिना मरे मानेंगे नहीं। आ जाओ फिर। Nothing to worry about. Hold on. There you are. Hey, time to die! Faster! Faster! Fight smarter. Your hour has come. What? I'll silence you! यहाँ जितने गार्ड्स थे आधे से ज्यादा को मार दिया है, लेकिन इस चक्कर में वांटेड लेवल 2 हो गया है। This must be Kong's crate of tea leaves. Looks like this crate is still intact. Kong will be pleased. तो बासिम बोल रहा है कि कॉन्ग की जो चाय पत्ती का डब्बा है वो अभी तक खोला नहीं गया और कॉन्ग इसको देखकर खुश होगा। इस चाय की पत्ती के डिब्बे के लिए इतने गार्ड्स को मारना पड़ा है। कॉन्ग, कोई काम की इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है? My leaves! Praise be to you, little Finch. Where shall I put it? Come, put it here. Basim delivers once again. Many thanks, little Finch. Where are these from? India? No, this is all the way from China. Dali, my hometown, produces the best leaves. I also import leaves from India and even Persia. Moving up in the world, Kong. Kah first, then the world. I am now selling my goods at the grand auction. Have you heard of it? The Da'irat al-Mal. Yes, I am trying to get in. Why? What kind of business are you doing, little Finch? Why not share it with me? We work so well together. The kind of business that could get you into big trouble. Do you think you can help me get into the auction? Ah, that is my Basim. Always with the secrets. But do not play around, huh? Kah is much more dangerous now than before. The auction is very exclusive. It is not easy to get in. I can help you, little Finch. But first, I have a request. ये कौन काम पे काम करवाए जा रहा है? See there? Blocked. The guards are stopping everything that comes in from the road and river. It is as if they are taking orders from someone higher up. These days, they do not even accept my bribes.
They must be looking for something. An object, or... Some stupid nonsense. I do not know. But they spoil my business. That I do know. Now, I just sell dumb leaf water. I hear that they keep the items in the harbor master's guarded warehouse, somewhere east of here. Let me guess. You want me to help you free your wares in exchange for entry into the auction. The warehouse is decorated with banners around some cranes. My items for entry into the auction. Sound like a good deal? Sounds like a deal. तो ऑक्शन में कॉन्ग एंट्री दिलवा देगा, लेकिन उससे पहले इसका सामान छुड़ा के लाना होगा गार्ड से। Hey you, Kong's friend. I may have something you would be interested in. Come closer. अच्छा, ये लुकात भी बोल रहा है कि कॉन्ग के दोस्त यानी कि बैसिम को तुम मेरे पास आओ, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसमें तुम इंटरेस्टेड होगे, तो उसके पास चलेंगे हम लोग। तो बैसिम कॉन्ग से पूछ रहा था कि ये चाय की पत्ती तुमने कहाँ इंडिया से मंगवाई है? तो कॉन्ग ने बताया कि नहीं, मैंने अपने होम टाउन चाइना से ये चाय की पत्ती मंगवाई है और मैं इंडिया से भी मंगवाता हूँ और इसके साथ साथ मैं पर्शिया से भी चाय की पत्तियां मंगवाते रहता हूँ। लेकिन आजकल ये गार्ड्स इस बात पे तुल गए कि मेरा वो लोग बिजनेस खराब करवा के रहेंगे। एक तो सड़क भी ब्लॉक कर दिया है और नदियां भी ब्लॉक कर दिया और मेरे से रिश्वत भी नहीं लेते, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो लोग ना कुछ सामान ढूंढना चाह रहे हैं। तो चलो इसका सामान छुड़ा के लाएंगे, पहले आदमी से बात करते हैं। What can I do for you? This is about what I can do for you. Did Kong ask you to enter a warehouse? Just say what you have to say. That Kong is always trying his luck. Well, it's his lucky day because I happen to know where it is. All I need is something in return. तो ये लूका जानता है कि वो वेयर हाउस कहाँ पर है जहाँ से कॉन्ग का सामान छुड़ा के लाना है, लेकिन इसको चाहिए रिश्वत, तो इसको ये एक ग्रीन टोकन देना पड़ेगा। Tell me what you know. Follow the road, cross the bridge on the right. You'll see the warehouse on your left. Past the river. That narrows it down. Thank you. तो लुका ने रिश्वत लेकर बता दिया है कि कॉन्ग का ये जो सामान है वो कहाँ पर मिलेगा। तो अब अगर उस ऑक्शन में एंट्री चाहिए जहाँ पर वो ऑर्डर का मेंबर आने वाला है, तो कॉन्ग का ये जो सामान है वो उसको लाके देना पड़ेगा। अच्छा, गार्ड्स किसी के ऑर्डर पे रास्ता ब्लॉक करके रख रहे हैं क्योंकि वो ना कुछ खास ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही गए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना ये जो मेरा वांटेड लेवल 2 है इसको थोड़ा कम कर लिया जाए, क्योंकि गार्ड्स मुझे देखते एक साथ मुझ पे हमला करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वांटेड लेवल कम करने के लिए आप लोग जान रहे हो कि पोस्टर फाड़ना पड़ेगा। पोस्टर दिख रहा है क्या? यहीं कहीं आसपास है। ओ, ये चारपाई पे पोस्टर क्यों लगा हुआ है मेरा? Better keep a low profile. तो ये जो वेयर हाउस में जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर सिर्फ कॉन्ग का नहीं बल्कि जितना भी सामान जब्त किया हुआ सब यहीं पर होगा। यानी ये बात कंफर्म लग रही है कि वेयर हाउस में बहुत ज्यादा गार्ड्स होंगे। Don't want you here. अंदर जाने का रास्ता देखना होगा पहले। Guide me, Enkidu. Go away. तो जैसा अंदाजा लगाया था ना, वेयर हाउस में टाइट सिक्योरिटी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई रास्ता होगा अंदर जाने का। जिस हिसाब से यहाँ पे बम्बू लगा के रखे हैं ना भाई, यहाँ से तो नहीं चढ़ा जा सकता है। Not what? Grant me strength. अच्छा, ये सारी दीवार बनी है गार्ड करने के लिए, यहाँ से भी, लेकिन कूदने का अंदर है नहीं। यहाँ से भी कूद, अंदर से कूद सकता था लेकिन फिर ब्लॉक ही हो जाता। The warehouse Kong mentioned.
I need to find out more about this harbor master. तो ये जो हार्बर मास्टर है इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से निकालनी है पहले। ये आग वाली को अगर नहीं न मारा ये बाद में बैंड बजा देगा। Hey, what? Come out. Let's bathe in... Hey! तो सारे रोड ब्लॉक्स और जो नदियां ब्लॉक करवा के रखी ये सब हार्बर मास्टर के कहने पे हुआ है। तो ये बात एक तरह से कंफर्म लग रही है कि ये भी किसी ऑर्डर के मेंबर ही के लिए काम कर रहा होगा। A strongly worded letter to the harbor master. He let a hairpin slip through their fingers, and someone is not happy. There is a scent on this letter, and the familiar symbol, Al-Kululu. Looks like the harbor master is part of the order. तो इस लेटर से ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो हार्बर मास्टर है वो भी ऑर्डर ही का मेंबर है। तो इस हार्बर मास्टर को किसी ने लेटर लिख के भेजा था कि तुमको मैंने बोला था कि वो हेयर पिन जो आ रहा है वो किसी भी हाल में मुझे चाहिए, लेकिन तुमने उसको शहर में आने दिया और वो अब ऑक्शन में बिकने वाला है, तो अब उसे मैं डायरेक्टली ऑक्शन में खुद खरीद लूंगा। और जिस परफ्यूम की खुशबू उस टैक्स कलेक्टर के लेटर में थी ना, वही सेम परफ्यूम की खुशबू यहाँ इस लेटर में भी थी। यानी कि ये टैक्स कलेक्टर और ये हार्बर मास्टर दोनों किसी एक ऑर्डर के हाई मेंबर के लिए काम कर रहे हैं, और ये ऑर्डर का मेंबर ऑक्शन में आने वाला है हेयर पिन खरीदने के लिए। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हार्बर मास्टर के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालनी है। The Da'irat al-Mal. Ceramics, exotic wares, and rare goods. All on display. तो ये जो ऑक्शन होने वाला है उसमें बहुत ही रेयर टाइप के आइटम्स का सेल होगा, और ये जो ऑर्डर का मेंबर है उसको एक हेयर पिन चाहिए, जो सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन कुछ तो बात होगा तब ना उसको ये हेयर पिन चाहिए, जिसकी वजह से इतना इतना रोड और नदियां ये सब ब्लॉक करके रखवाया है उसने। तो इसको बोलते हैं असली गार्ड, क्योंकि घंटी बजा दी अब भर भर के गार्ड्स आएंगे। अच्छा, ये आग से भरी हुई मटकी फेंक के मारूं क्या? वाह भाई, क्या पागल आदमी था, मतलब खुद को भी मरवा लिए, मेरी भी हेल्प ले गया। अच्छा, ये हार्बर मास्टर के बारे में इसलिए बासिम इंफॉर्मेशन निकाल रहा है ना, क्योंकि वो भी ऑर्डर का मेंबर है, तो उसको भी तो मारना ही पड़ेगा ना ढूंढ कर। Pathetic. Stop that, you devil! वो रोल करने वाला जो स्किल लिया है उसके बाद इस गार्ड को मारना थोड़ा आसान हो गया, नहीं? अच्छा, जो बचे कुछ गार्ड्स हैं ना उनको भी मार ही देते, फिर आराम से यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है हार्बर मास्टर के बारे में उसको फिर ढूंढ ही लेंगे। अच्छा, इस एरिया में 3-4 ही गार्ड बचे, लेकिन मेरे को मेन चाहिए इन्फॉर्मेशन। इनको मार के क्या फायदा मिलेगा मुझे? I will find you.
Rest now. Marha, these tea leaves from the east are worth more coin than mine of तो ये गार्ड किसी चाय पत्ती की तारीफ कर रहा है, कहीं ये कौन की चाय पत्ती तो नहीं है? A list of exotic foreign goods seized. Most from out of Baghdad. There are Kong's things. Vases and some expensive tea leaves. This should be what Kong needs. और उसमें चाय की पत्तियां भी हैं, तो बासिम को लग रहा है कि यही वो सामान होंगे जो कि कॉन्ग के और जब्त कर लिए गए हैं। लेकिन इस हार्बर मास्टर के बारे में अभी भी इंफॉर्मेशन निकालनी है यहाँ से। एक इंफॉर्मेशन और बची हुई है। तो ये जो लेटर है ना, कुछ ऑरेंज टाइप का पेपर होगा, जो कि यहाँ तो नहीं दिख रहा है मुझे, पीछे लगता है कहीं छोड़ दिया है। तो इस बिल्डिंग में एक और लेटर दिख रहा है। आई थिंक ये लास्ट लेटर है। Instructions to search any and all foreign goods. For an artifact. An ancient Chinese hairpin specifically. This all starts at the harbor. The harbor master has set up this blockade for foreign wares. Especially for ancient artifacts from the east. There is nothing more here. The harbor master is waiting. तो जितने भी रास्ते ब्लॉक किए इस लेटर से पता चल गया कि कोई प्राचीन हेयर पिन के लिए ब्लॉक किए गए हैं। और ये तो कंफर्म ही लग रहा है कि ये जो हेयर पिन है ये भी उन्हीं प्राचीन सामानों में से एक है जो कि ऑर्डर के मेंबर्स को चाहिए। तो ऑक्शन में जाके उस ऑर्डर मेंबर को रिवील करेंगे, लेकिन उससे पहले हार्बर मास्टर को मारना है। Ignore me. तो अभी एक दिन भी नहीं बीता और टैक्स कलेक्टर को इसी एरिया में मारा है बासिम ने। तो हो सकता है कि ये जो हार्बर मास्टर है ये फुल सिक्योरिटी में होगा। They are looking for me. इस बारे में जितना भी सोच लो भाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वांटेड लेवल 1 भी रहेगा तब भी सब चिल्लाने लगेंगे कि यही है वो खूनी, यही है वो दरिंदा। हाँ भाई, ऐसा क्या हो जाता है? और सबको इतना जल्दी चेहरा याद कैसे हो जाता है पोस्टर में देख के? और पोस्टर भी कौन सा फोटो से खींचा हुआ है? उस टाइम तो पेंट वेंट बनता होगा ना। हाँ, तो इतना जल्दी पेंट लगा के सब पहचान भी लेते हैं ऐसे, लेकिन पहचान भी लेंगे। बासिम का कपड़ा ही पूरे देश में यूनिक है। Go, Enkidu. सबसे पहले ये देखना होगा कि हार्बर मास्टर किस कमरे में छुप के बैठा हुआ है। तो इस हार्बर मास्टर को बचाने के लिए बहुत सारे गार्ड्स होंगे, लेकिन बासिम ने जब ये ठान लिया कि ये मरेगा तो इसकी मौत एक तरह से कंफर्म हो चुकी है। Another war between the people and power at play.
I hope the harbor master is not expecting me. तो वैसे उम्मीद तो यही कर रहा है कि हार्बर मास्टर को ये नहीं पता हो कि उसको कोई मारने आ रहा है, तो मारना ज्यादा आसान रहेगा। अगर वो अपना रिलैक्स होके चिल होके घूम रहा है तब ठीक है, लेकिन अगर उसको पता है कि उसको कोई मारने आ रहा है तो और वो 7 तालों में छुप गया होगा। You have no business here. अच्छा, इस किले की दीवार से तो चढ़ के नहीं जा सकते हैं, लेकिन पानी से हम लोग जा सकते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं। Cast your gaze, Enkidu. तो अंदर जाने से पहले ना पूरे एरिया में देख लेते हैं कितने गार्ड्स हैं यहाँ पर, किन चीजों का यूज कर सकते हैं। ओ, ये आराम से ऊपर ही घूम रहा है, इसको मारना आसान है, लेकिन नीचे बहुत सारे गार्ड्स घूम रहे हैं। ठीक है ठीक है, सबको मार कर लिया जाए, फिर चुपचाप से ऊपर जाते हैं। ये जो सामने केज है उसमें डॉग्स, ओ मां कसम भाई शेर है। तो इन लोगों ने अपने पास शेर को भी पाल के रखा, वो भी दो, बहुत बढ़िया। Die now. तो ये जो 2 तेंदुए हैं, इन्हीं के लोगों पे आजाद कर देते, ये लोग जाके उन पे हमला कर देंगे। मैं अपना साइड से निकल गया, लेकिन इनकीडू से हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। Be my eyes, Enkidu. ये प्लीज मत बोलना कि इनके पालतू तेंदुए तो इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, इनके ऊपर हमला कर दिया है, वो भी उस आग वाले के ऊपर। भाई साहब, अच्छा ये जिसके पास आग वाला कंटेनर, ये घोस्ट राइडर लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर 2 तेंदुए ने अटैक कर दिया। मारो मारो उसको, मार दो, तब मैं आराम से जा सकता हूँ फिर। Down with you. Trickery is this? I will cook you where you stand. Stand and fight, you worm. What the? तो वो हार्बर मास्टर ऊपर इंतजार कर रहा है, चलो उसका काम खत्म करते हैं। तो ऐसे ही कि काम हो गया, निकला जाए। वो निकल नहीं सकते हैं, हार्बर मास्टर से कुछ लेना है। ठीक है, अच्छा इसके किल को कंफर्म करना है। तो ये हार्बर मास्टर ऑल्सो नोन एज अल कुलुलू मर चुका है, अब यहां से निकला जाए। तो कॉन्ग के पास जाके उसको बताना है कि हार्बर मास्टर मर चुका है, इसलिए जो भी सामान है वो अब तुम ला सकते हो बाहर देश से। That person looks suspicious. I should investigate. तो कॉन्ग तक तो पहुंच गए, लेकिन ये बहुत काम करवा रहा है। अब कोई तीसरा काम नहीं करवा ले भाई, अब चुपचाप से ऑक्शन में एंट्री दिलवा दे, ताकि इस एरिया का जो मेन ऑर्डर का मेंबर है ना, जो हेड है, उसको भी मार सके, और उसके बाद फाइनल ऑर्डर का मेंबर। ओह भाई मजा ही आएगा। Kong! Seiya? Who goes there? I have a weapon. Just me. Ah, the little finch returns to the nest. Empty-handed? It is here. This can help you get your wares out from the harbor.
Huh! I never doubted you for a second. Come, let us enjoy a cup for the memories. I will even make your favorite. What did you find there? Who was behind it? A man by the name of Javid. He was working for someone, looking for an artifact. An exotic hairpin. It is important somehow. I need to find out why. I must. You have changed, little Finch. Or should I just say, Finch? When we last met, you were a street thief. Now, I hope you know what you are searching for. Sometimes, it is best to leave the thorn in, lest you bleed dry. Now, for what was promised to me? An invitation to the auction. It is only given to esteemed guests. Do not ask me where I got it from, unless you want lies. With that scroll, you can get in without having to fit yourself in one of my boxes. That was your plan. Men have endured worse to reach their goals. तो कॉन्ग ने पता नहीं कैसे लेकिन जुगाड़ कर लिया इनविटेशन का और वो बैसिम को दे दिया है. Someone influential is looking for the hairpin, but let it slip. Now the only chance they have is at the grand auction. Nothing else. Roshan and Rebecca will be waiting back at the bureau. तो बैसिम जब लौटा तो कॉन्ग चौंक गया. बोला तुम लौट तो आए लेकिन खाली हाथ. तो बैसिम ने हंसते हुए उसको एक लेटर दिया. बोला कि ये लेटर जाके गार्ड्स को दिखा देना और तुम्हारे जो भी सामान है ना वो सब तुमको वापस लौटा दिए जाएंगे. और कॉन्ग बैसिम से पूछने लगा कि तुमको पता लगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ था. तो बैसिम ने बताया कि हार्बर मास्टर किसी जावेद नाम के आदमी के साथ काम कर रहा था और उन्हें किसी खास तरह का हेयर पिन चाहिए जिसकी तलाश में ये लोग लगे हुए हैं और इसी की वजह से रास्ते और नदियां ब्लॉक करके रखी हुई हैं. और कॉन्ग बैसिम को प्यार से छोटी चिड़िया बुलाता था लेकिन अब बोला कि भाई तुम तो अब बहुत ज्यादा बदल गए हो. मुझे तो बस तुम्हारे बारे में ये याद है कि जब तुम बच्चे थे तो सड़क पे बस चोरी करते थे और अब तुम्हें पता नहीं किस चीज की तलाश है और मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम जो भी चीज की तलाश कर रहे हो वो तुम्हें मिल जाए. और कॉन्ग एक तरह से वार्निंग भी दे रहा था बैसिम को कि देखो कांटे को ना कभी कभी ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसको ज्यादा छेड़छाड़ करने से बहुत ज्यादा खून भी निकल सकता है. और कॉन्ग बताने लगे कि ये जो ऑक्शन का इन्विटेशन है ना बहुत ही खास लोगों को दिया जाता है और मैंने ये कैसे जुगाड़ किया ये मत पूछना क्योंकि अगर ये सवाल पूछोगे तो मैं बस झूठी बोलूंगा तुमसे. और अच्छा हुआ कि इन्विटेशन मिल गया क्योंकि अगर इन्विटेशन नहीं मिलता तो मैं तुम्हें ऑक्शन में अपने इस डब्बे में भर के ले जाता. बैसिम बोलने लगे कि भाई तेरे को इन्विटेशन नहीं मिलता तो तेरा ये प्लान था मुझे डब्बे में भर के ले जाना. तो कॉन्ग बोलने लगे कि लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ना इससे ज्यादा दर्द सह लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ठीक है चलो अपने पास इन्विटेशन है और इस बारे में जाकर रेबेका और मास्टर रोशान को बताते हैं. Our prodigal hidden one returns. Finally, you found the path back. What do you have for us? The one we are looking for is a Dimyun, someone out of Baghdad. You are certain? I found proof. They were working with the tax collector and the harbor master. One used the guards to harass and extort coin from the Dimyun. The other seized goods at the docks. Extortion, I understand. But seizing goods? More objects from these ancient beings they worship? They are looking for a rare hairpin imported from the East Road. It will be up for auction at the Da'irat al-Mal. An official invitation into the auction. Now, we have a way in. Well done. Our target has to be someone connected to both Al-Anga and Al-Kululu. Someone working closely with the officials. Informers heard whispers of the Khalifa's treasurer. In recent times, they have been quite involved in the businesses of Kar. Someone like that will no doubt make an appearance at the Da'irat al-Mal. We should prepare, so I will scout ahead. Meet me near the souk when you're ready. Not a lot is known about this person. Underestimating your opponent is a fool's folly. Worried? I will tread carefully. तो अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी और जो हार्बर मास्टर को मारा और टैक्स कलेक्टर को मार दिया है तो ये सारी इंफॉर्मेशन मास्टर रोशान और रेबेका को दे दी है बैसिम ने. और रेबेका बता रही थी कि खलीफा का जो खजांची है ना वो आजकल बहुत इन सब कामों में लगा हुआ है. तो बैसिम ने बोला कि इतनी पहुंच वाला आदमी तो ऑक्शन में जरूर आएगा. तो फिलहाल मास्टर रोशान से जाके बाजार में मिलना है और फिर ऑक्शन जाएंगे ये देखने के लिए कि ये जो ऑर्डर का मेंबर है ये कौन है और उसको कैसे मारना है.
और फेल आर्मी देख रहे हो ना, इस वाली वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत है, इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई एकदम फटाक से कर लो। और अगर आप नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन दबा के रखो। और ये बात याद रखना है, जो भी मैं गेम प्ले सीरीज स्टार्ट करूंगा भले उसमें व्यूज कम हो ज्यादा हो, लेकिन जब तक खत्म नहीं हो जाता वो आते रहेगा। बीच बीच में हो सकता है अलग गेम्स भी आए, लेकिन जो स्टार्ट कर दिया है वो खत्म होगा। Σταμάτα το αυτό, ρε κοπρίτη. बस इस वाले ऑर्डर के मेंबर को मार दिया ना, फिर वो जो फाइनल ऑर्डर का मेंबर है वो भी मिल जाएगा। The plan is simple. Enter the auction as a merchant wishing to bid on exotic artifacts. We know they want the hairpin, and we know they will be at the auction. They already let it slip through their fingers once. When the hairpin appears, I will watch the crowd and make sure to obtain it. That will secure a meeting with this treasurer. I am fully confident they will bid on it, whatever the cost. Yes. I will gather as much information as I can about this treasurer before the auction starts. For someone in their position, there will be no lack of whispers. The first feather without a head. It is your duty to find the right one. Do not let yourself get distracted. Focus on the mission at hand. It does no one good to linger on things that do not exist. This is real. I understand. Silence is better for the wise, and how much more so for fools. Habban muwaffaqan. Do you think we need luck? तो पहली बार मास्टर रुशान ने फेदर तो दे दिया है, लेकिन टारगेट का नाम नहीं पता है, पता नहीं है कि वो कौन है, कैसा दिखता है। इसलिए मास्टर रुशान गुड लक बोलते हुए गई हैं और बोला कि देखो गलती मत करना। There is a rot in Karkh, treasurer. Property stolen, merchants extorted, foreigners tormented. Corruption is rank and everywhere. But you are at its heart. Even now, your poison spreads along the East Road to lands untouched by the Order's venom. I hear you hunger for a hairpin. One up for auction at the Da'irat al-Mal. I will play the rival for your heart's desire and draw you from the shadows. तो मास्टर रोशान ने बोला कि प्लान काफी सिंपल है, तुम एक मर्चेंट बन के जाओगे और ऐसा दिखाओगे कि तुम जो भी यहाँ पर खास सामान बिक रहे हैं उन पे बोली लगा कि उनको खरीदना चाहते हो। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो है ही कि ये जो ऑर्डर का मेंबर है उसे चाहिए वो हेयर पिन, और एक बार उनके हाथों से ये ऑलरेडी फिसल चुका है, इसलिए इस बार तो वो लोग इसको जाने नहीं देंगे। तो बासिम ने बोला कि ठीक है, मैं भी हेयर पिन पे बोली लगा के उसे खरीद लूंगा, और तब ये जो ऑर्डर का मेंबर है वो मुझे मिलने के लिए बुला सकता है, तब उसको जाके मारना आसान रहेगा। पर मास्टर रोशान को देखो बासिम पे थोड़ा सा ये लग रहा है कि इसको जो जिन विन नजर आते हैं इसकी वजह से ऐसा कहीं नहीं हो कि इसका ध्यान भटक जाए, इसलिए इन्होंने बासिम को बोला कि देखो ये रियल है, ठीक है, ये कोई ऐसा ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं है। और ऑक्शन में जाकर बोली लगाने से पहले ना ये जो खजांची है इसकी असली पहचान पता करनी है कि ये कौन है। तो इसलिए बाजार में जो इन्फॉर्मेशन मिल सके ले लेंगे और उसके बाद फिर ऑक्शन में जाएंगे। तो ऑर्डर के फाइनल मेंबर से पहले सेकंड लास्ट मेंबर को मारा जाए। For the fool, for the pilgrim, for the man with no physician to attend him. Refreshing to see the bazaar so lively. The traders only bring in the finest spices I want during the auction. It is the time to buy exquisite. What do you see? तो इन कीडू इस बार कुछ पता नहीं लगा पाएगा, मुझे ही जा के चेक करना होगा कोई काम की बात। Yet we still have persons dressed in a hood. Ceramics and textiles from the east.
तो यहाँ बैठ के मैं ये देख रहा था कि किसी की काम की बात सुनने का ऑप्शन आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा है ना, एक काम का आदमी दिख गया, वो जो ऑरेंज है। Basim, liar! Should have known you would be here, Kong. Do you have any information about the treasurer? Someone who works for the Khilafah. The treasure? I do have something, but you know, it hurts to give precious information for free. What job do you need doing now? Already know what is on my mind, eh? You see, little Finch, the Da'irat al-Mal is not only an important event for the upper class of Kach, but also for thieves. Did someone take something of yours again? A precious ceramic saucer. Luca has it. He has always been jealous of me. Where do you think it is? I knew I could rely on you, little Finch. You should be able to find it in the crates near his stall. Be right back. तो बैसिम कॉन्ग को देख के बोल रहा था कि मुझे पता होना चाहिए था कि तुम यहीं मिलोगे कॉन्ग। और बैसिम इससे उस खजांची के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहा था, तो कॉन्ग ने बोला कि देखो फ्री की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो बैसिम ने बोला कि इस बार क्या काम करवाना है भाई तेरे को। तो ये बताने लगा कि इसका कुछ सामान चोरी कर लिया उस लुका ने, तो वो सामान अगर मैं इसको लाके दे देता हूँ तब ये इन्फॉर्मेशन देगा। अच्छा, एक और काम का आदमी दिख रहा है, इससे भी बात करते हैं। أهلاً. Come upstairs and look at my wares, ya Sadiqi. Things you've never seen before in Baghdad. Exotic Chinese artifacts. Here only. Nowhere else. Don't be shy. Come closer and be amazed at my selection upstairs. तो इस मर्चेंट के पास कुछ ऐसे चाइनीज आर्टिफैक्ट्स हैं जो ये बोल रहा है कि मैंने कहीं नहीं देखे होंगे बगदाद में। तो देखते हैं क्या सामान दिखा रहा है। Assalamu alaikum. You mentioned Chinese artifacts. Yes, friend. Welcome, welcome. You will surely find something of interest here. Beautiful threads, smooth as a camel's buttered bottom. A special for you, ya Sadiqi. Longing for the exquisite, ya Sadiqi? I have ornaments that hail from the Far East on auction. Rare vases, delicate teacups. But the hairpin is my prize. One of a kind. A beauty even the treasurer asked about. Wait, the hairpin? Where is it? It's going to be up for auction. If you wish to purchase it, make sure to bring a good bag of coin. A hairpin from the east. This must be the item El Kululu was after for the treasurer. I must look out for it at the auction. तो ये जो मर्चेंट है ना, यही वो हेयर पिन लेके आया जो कि ऑक्शन में बिकने वाला है, और वो खलीफा का खजांची इसी हेयर पिन के पीछे है। और इस मर्चेंट ने बोला है कि अगर आपको ये हेयर पिन खरीदना है तो भर के पैसे लाना, लेकिन मैं अपने पैसे क्यों लगाऊंगा, मेरे अलावा जो भी खरीदेगा उससे चोरी नहीं कर लूंगा। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन कॉन्ग का सामान लाएंगे तब वो खजांची के बारे में और इन्फॉर्मेशन देगा। कॉन्ग बहुत काम करवाता है, ये तीसरा मिशन करवा रहा है कॉन्ग। तो वो जो सामान चोरी हुआ है ना कॉन्ग का, वो इसी के अंदर है, लेकिन इसके अंदर जाए कैसे? दरवाजा लॉक है, खिड़की कोई दिख रही है क्या? This must be the stall Kong mentioned. Now to find that plate. तो कॉन्ग की वो प्लेट इतने सामने रखी हुई है लेकिन उठा नहीं सकते हैं। इसके अंदर कैसे जाएं? दोनों दरवाजे बंद है, कोई खिड़की भी नहीं है। अच्छा, नीचे की तरफ एरो दिखा रहा है, लगता है नीचे से कोई रास्ता है। I assume you heard about the commotion a few stores down. Oh no, thank you. Another pair of traders fighting. अच्छा, ये जो आग वाले कंटेनर है ना, इससे आगे का रास्ता खोलना है। तो अंदर से लकड़ी लगा के ऐसे रास्ते बंद किए हुए हैं
तो जिसने भी ये सामान चोरी करके यहाँ रखा होगा तो वो क्या मतलब इतनी मेहनत करके यहाँ आया है। तो जो रास्ता खोल, अच्छा ये जो रास्ता खोल लिया है इससे ये बॉक्स को खींच के ले जा सकते हैं क्या ऊपर चढ़ने के लिए? शायद किया जा सकता है, लेकिन जगह तो उतना नहीं लग रहा है। जाएगा क्या? तो ये चीज ट्राई करके देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ से डोर खोल लेते हैं। अगर किसी तरह मैं बाहर चला गया तो एटलीस्ट अंदर आने का रास्ता तो रहेगा। उस खजांची की पहचान जानने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। Trust Kong to own a plate like this. Now maybe he will tell me what he knows about the treasurer. Suspicious activity on the rooftops. तो कॉन्ग की जो प्लेट चोरी हुई थी वो बैसिम ने उठा लिया है और ये उम्मीद कर रहा है कि अब कॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा खजांची के बारे में। और बैसिम बोल रहे थे कि छत पे कुछ 3-5 हरकत चल रही है, लेकिन अगर साइड मिशन है तो जाने दो। फिलहाल देखते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है और कॉन्ग का ये जो प्लेट है उसको लौटा देते हैं। बैसिम बाकी सबको धक्का मारा है ठीक है, लेकिन गार्ड्स को धक्का मत मारना। Here, Little Finch delivers once again. Just the very thing I need to complete my set. I thought this was yours. It is now. Anyway, listen close. I was having my usual afternoon tea when I overheard two ladies speaking about an order they fulfilled for the Dayadat al-Mal. They made a beautiful robe for the treasure with intricate Eastern embroidery. Open your eyes to that. Eastern ware. Thank you, Kong. The treasurer is likely a foreigner from the east. ये एक्चुअली में लूका ही की प्लेट थी और कॉन्ग ने झूठ बोला था कि उसकी प्लेट है, तो ये तो चलो ठीक है। और दूसरी बात ये कि कॉन्ग ने दो औरतों को बात करते हुए सुना है कि उन्होंने इस खजांची के लिए एक खास तरह का कपड़ा बनाया है, तो उन औरतें की बातें जाके सुननी है। प्लस इस ऑर्डर के मेंबर के बारे में इतना पता है ना कि ये बाहर देश का रहने वाला है, बगदाद का नहीं है ये। Tardiness is not something the treasurer appreciates. Not something we can rush, yes, Saidati. The treasurer will not be happy. Neither will I. I know that. The perfume creation is complex. We are already doing our best. Your best is not enough. Come. We talk elsewhere. There are ears in the walls. That woman mentioned the treasurer. I should keep my ears close. The treasurer is fond of the Kina, as you know. No one is more unhappy when 36 bottles go missing. With the harbor withholding our supplies, production has been slow, yes, Saidati. Certain incidents there have also made our situation difficult. तो ये जो दो औरतें हैं उनमें से एक परफ्यूम सप्लायर है जिसकी मदद की थी हमने, और दूसरी औरत का नाम कबिया है और वो इस परफ्यूम सप्लाई से बोल रही है कि देखो तुम परफ्यूम देने में बहुत देर कर रही हो और खजांची को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके काम में देरी हो और मैं भी खुश नहीं होंगी तुम्हारे इस काम से, इसलिए जल्दी से जल्दी परफ्यूम सप्लाई करो। तो ये जो औरत है कबिया, ये खजांची के लिए काम कर रही है, तो इसको फॉलो करना और इससे देखते हैं कि पता करते हैं कि ये खजांची कौन है। You are not telling me exactly what it is we are missing. The blood, my lady. The blood is essential in the scent. It is what makes the Kina perfume special. We must have it. I will talk to the Khalifa. See what we can do. The treasurer will have to wait for her supply. This perfume on the tax collector's letters.
I thought it smelt like iron. Was it blood? This woman could be from the Khalifa's inner circle. She knows the treasurer. I must speak to her. तो परफ्यूम बनाने वाली बोल रही थी कि एक सामान मिसिंग है, इसलिए परफ्यूम बनाने में देरी हो रही है, और वो सामान है खून। तो खजांची के परफ्यूम में खून भी मिला हुआ है। बहुत बढ़िया, इससे बात करते हैं। Assalamu alaikum, ya Sayyidati. Wa alaykum assalam. I could not help but overhear, Sayyidati, about the perfume. It is not courteous to eavesdrop. Seeing as you are an admirer, you are pardoned. My name is Kabiha, the woman behind the kina. It has a unique scent. Rose, honey, sandalwood. And if you heard, a sliver of blood. Blood. I should have guessed. I had thought it might be iron. Blood is born from iron, is it not? But because of that detail, it proves difficult to bring in large quantities. If it is so exclusive, it must be popular amongst officials. I think I caught a scent of it near the treasurer. Ning uses the kina. She is quite taken with its rich mystique, as are many. Curious. You do not look like one who is interested in the art of perfumery. It is unwise to judge someone by how they look. Indeed. Did I not catch your name? Basim. Basim. I must not waste any more of your time. I wish you a wonderful time at the Da'irat al-Mal, ya Sayyidati. तो ये जो कबिया है ना, यही परफ्यूम बनाती है, और परफ्यूम में इनकी खास रेसिपी है कि ये खून को भी मिलाती है, और उस खजांची का असली नाम पता चल गया है, निंग है। So, the treasurer is a she, and her name is Ning. The auction should be starting soon. तो बासिम इस परफ्यूम में काफी इंटरेस्ट दिखा रहा था और झूठ भी बोल रहा था कि हाँ मुझे इस परफ्यूम में काफी दिलचस्पी है। तो कभी इससे बोल रही थी कि तुम्हारा लुक देखकर तो लगता नहीं कि तुम ऐसे आदमी हो जिसको परफ्यूम में इंटरेस्ट हो। तो बासिम ने बोला कि लुक से किसी को ना जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अब ऐसा है कि ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, खजांची का असली नाम भी पता चल गया है। तो चलो ऑक्शन चलते हैं और वो जो हेयर पिन है उसको खरीदते हैं या फिर चोरी करते हैं, देखते हैं जो भी होगा। इसका चेहरा अभी तक रिवील नहीं हुआ है क्योंकि देखा नहीं है, नाम पता चल गया है, इसको मार दिया। उसके बाद वो जो बीच में बना हुआ है इनका बॉस, वो भी रिवील हो जाएगा। या उसको रिवील करना पड़ेगा तो कर देंगे हम लोग, टेंशन क्या है। तो ये वाली ऑर्डर का मेंबर का चेहरा देख लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Marhaban, assalamu alaikum, yasas, ni hao, hello. It is the time of year again to fulfill your deepest yearning, to listen to your heart's desire and purchase what God has shown us. It brings me great joy to welcome all of you esteemed individuals to our annual Dairat al-Mal. First on our exclusive, captivating list of exotic odds and ends, we have a stunning statue from India. Made of ivory and crafted by the finest artisans, it will be a perfect addition to any home. Oh, what do we have? One bidder already? No, two. Calling once, twice, a third. Would anyone like to best that price? No? So, this piece goes to the lovely lady. अपने को हेयर पिन का वेट करना है। Next, we have a one-of-a-kind ethereal beauty. This hairpin hails from the east. And look at the detail on the dragon. Perfect as a collectible, and even better as a gift for a certain lady friend you might have. So what is this piece worth to you, ya Asdiqai? One for the treasurer who graced us with her presence. Ning, the treasurer. Two. Any others? ये लोग जो 1 और 2 बोली लगा रहे हैं, खजांची अब इसके आगे बोली नहीं लगाना चाहती है। ओ ठीक है, 150 में पैसे क्यों दूं भाई, लेकिन ठीक है चलो 150 उतना भी महंगा नहीं है। We have a third there. Ho, who owns it again?
Number 3. What will you do? How much do you want this, my friends? Reach into your heart. Listen to your desire. अच्छा 500 कॉइन्स चाहिए और उतने तो है भी नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, चोरी कर लेंगे इससे हेयर पिन। इसको लगाने दो बोली। Sold to the man over there. Kindly collect your item from my associate after the auction. Now, moving on. तो इस ऑर्डर के मेंबर को चाहिए वो हेयर पिन, तो अगर उससे मिलना है तो पहले हेयर पिन चुरा के लाना होगा। And we thank you once again for making the Dairatul Mal a success. May your purses be ever full and your heart ever longing. तो जिस आदमी ने बोली लगाई खरीदा उसको मारेंगे नहीं क्योंकि वो शरीफ आदमी है। I have to get the hairpin from that man. Why would the treasurer want it so badly? Calmness, grace, like a long, shiny star against the dark night. तो बासिम यही सोचा है कि इस हेयर पिन में ऐसी क्या खास बात है जो इस खजांची को इतनी बुरी तरह से चाहिए ये हेयर पिन, और इसके पीछे जो भी रीजन हो हम लोग चुरा के लेते आते हैं हेयर पिन, फिर बात किया जाएगा उससे। If only I could speak to her. Not a chance. I hear only members of the Merchant Guild can arrange an audience in her chamber. Found him. Well, Now to maybe quietly if I borrow found out the where she hairpin. purchased her robe. Intricate and beautiful indeed. What poor fools. But this is nothing like these ancient objects the Order is seeking. I must confront Ning. See that again when I present her with this gift. Let me take a look at the hairpin again. तो जिस मर्चेंट ने वो हेयर पिन खरीदा था काफी खुश हो रहा था, बोल रहा था कि खजांची का चेहरा देखा कैसा मुंह लड़ गया था, और उसे ये भी पता चल गया कि उसका हेयर पिन चोरी हो गया। अब वो रो रहा होगा, लेकिन उसके रोने से अपने हो गया। अपन मिलते हैं जाके उस खजांची से। I have an appointment with the treasurer. Move aside. Apologies. My instructions were clear. No brooch, no entry. Do you know who I am? I need to speak to the treasurer. I was called, summoned. Assalamu alaikum. I'm here to see the treasurer. On what business? I have a gift for the treasurer, if she will see me. Only members of the Ivory Coin are allowed to enter. No brooch, no entry. तो इस खजांची से मिलने के लिए ना आइवरी कॉइन चाहिए, अगर वो नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते। अब ये कहाँ मिलेगा भाई? अच्छा, वो जो आदमी से बहस नहीं कर रहा था अंदर जाने के लिए, जिसको पहले गार्ड ने मना कर दिया, अगर उसको ढूंढ के उसको फॉलो करें तो वो भी आइवरी कॉइन लेने जा सकता है ताकि उसे भी अंदर जाने मिले। तो उसको ढूंढ के फॉलो करते हैं। ये इतने लोगों को लूट लिया, लेकिन वो काम का आदमी यही है क्या? एक मिनट, यही ऑरेंज लग रहा है। देखते हैं इसको। तो ये लग तो रहा है कि वही आदमी जिसको गार्ड ने डांट के भगाया था, लेकिन ये तो ऐसे ही घूम रहा है, पर इसके ऊपर ऑरेंज बना हुआ था, यानी कि ये काम का आदमी। इसको फॉलो करते हैं। This is proof that I am of the Merchants Guild. Look, see? With respect, that does not entitle you to 3 bags of saffron, 2 of vanilla, and a bottle of honey without a single coin. Impossible! Bah! This is a waste of my time. Hello, spices for you? Trouble with customers. No more than usual. These people from the Ivory Coin think themselves touched by God himself. The Ivory Coin. I should not speak about it. I do not know much, really. तो इस मर्चेंट को ना आइवरी कॉइन किन लोगों के पास है ये पता है, लेकिन इनको भी रिश्वत देनी पड़ेगी। टोकन दे देते हैं। Whatever you know can help me. Well, it will not hurt to tell you what I know.
The Ivory Coin is an exclusive merchants guild. They have a brooch that grants access to certain places. How do you obtain this brooch? I hear only respected merchants are part of the Ivory Coin, and that you can only be invited by another member. They think their status gives them permission to take goods without coin. Have you ever seen such vanity? This is expected in Karkh. Thank you. तो ये आइवरी कॉइन रखने वाले मर्चेंट्स का पूरा एक ग्रुप है। तो अगर इस ग्रुप का एक भी मेंबर मिल गया ना तो उससे ये आइवरी कॉइन चुराना आसान हो जाएगा। तो ये जो आदमी जा रहा है इसको अगर फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि ये अपने को वहां ले जाए जहां से हम लोग आइवरी कॉइन चुरा सकते हैं। ओ, मिल ही गया है। No brooch, no entry. You know how this works. Yes, but I left my brooch in there. Do you not see the problem here? No brooch, no entry. لعنك الله. अच्छा, ये मर्चेंट ना आइवरी कॉइन ही का मेंबर था और इसने अपना ब्रोच अंदर छोड़ दिया है। An exclusive union for the merchants of high society. I should have expected this to exist. तो बासिम बोल रहा है कि हाई सोसाइटी के मर्चेंट्स ने अपना एक ग्रुप बनाया है। मुझे इस बात की उम्मीद होनी चाहिए थी कि ऐसा कोई ना कोई इनका ग्रुप होगा। The Chamber of Antiquities is the treasurer's haven. I need to find a way in. तो ये जो इनका सड़े हुए क्लब आइवरी कॉइन का ब्रोच है वो यहीं कहीं है, लेकिन ओके, गार्ड्स के पास है। I'll finish you! This must be the ivory coin's brooch. Shiny. I have both trinkets. The guard will have to let me in now. तो ऑर्डर की मेंबर निंग को जो हेयर पिन चाहिए वो है अपने पास, और जो स्पेशल ब्रोच चाहिए जिसे एंट्री मिल सकती है वो भी है अपने पास। तो चलो फिर इस निंग का काम तमाम किया जाए। هذا ما كنت بحاجة إليه بالضبط. حاولت تناول الموضوع صغيرا. سأتوقف. أخبرني المعلم بالزمن لكنني سمعت تساوي عدة. अच्छा, इस बाजार में ना फुल स्पीड में नहीं दौड़ सकते हैं। محدقا في ضفة. عمر الصغير هناك أيضا. Assalamu alaikum. You again? What is it now? I have something that she wants. A Chinese hairpin from the auction. I also have my brooch with me here. Very well. You may enter. अच्छा, सिर्फ इसको बोला कि मेरे पास ब्रोच इसने मान लिया। बोलता तो कि कम से कम दिखाओ मुझे। ठीक है, जो भी है, एंटर किया जाए। This way, Sayyidi. I have been looking forward to meeting the treasurer. It is an honor. Indeed, Sayyidi. She is busy, and her time only allows for a few rare appearances. I have never seen so many treasures in one place. इतने सारे खजाने एक साथ आज तक बासिम ने नहीं देखे। ये इस गार्ड के आर्मर को क्या हो गया है? फ्रॉग बन गया है भाई इसका आर्मर। This is of inferior make. I wonder if you really are the expert you claim to be. This plate is priceless, I swear it. Treasurer, Ning, if only you... Go. Lead the bus. Forget the plague out of my sight. Perhaps the dogs in the soup. Her standards are too high. One has to be careful not to get bitten in there. Please refrain from speaking about the treasure inappropriately. You may enter. तो ये मर्चेंट प्लेट बेचने आया था, लेकिन खजांची ने इसको डांट के भगा दिया कि ऐसी घटिया प्लेट पे तो मैं अपने कुत्तों को खाना खिलाती हूँ। इतने गार्ड्स है भाई, इन सारे गार्ड्स के सामने कैसे मारा जाएगा? चलो देखते हैं। You are a new face. My name is Basim. New to Baghdad, but not to trade. I deal mostly in fine antiques and collectibles. You must have a good eye for detail then. What have you brought me, Basim? You know what I brought. A man not to be toyed with. Come, show it to me.
तो ये तो सुना है ना, लालच बुरी बला है। हेयर पिन देखकर गार्ड्स को जाने बोल दिया ताकि बिजनेस की बात अकेले में कर सके, और अब मौका मिल गया इनको मारने का। Exquisite. Ever seen something like this? So perfect. So delicate. No, but I am surprised that you have not. I do have a penchant for them. When I was but a child, my sisters and I would tie our hair with sticks, adorn them with stone. I pretended they were the rarest gems. We had nothing, but we felt that we had it all. There are many reasons why people see me. For advice, a taste of power, and most often, to win favor. Why have you come, Basim? As a fellow collector, I have heard much about you from others. Your extravagance, your taste. I wish to learn. Did they say I was lucky? I loathe the word. When I first arrived in Baghdad, I was one of many seeking my fortune. Now, I have even the East wrapped around my fingers. I clawed my way here when many gave up, preferring to spare their nails. But me? I don't mind a few scratches, a bit of blood. Surely there have been connections. The people you met that helped you get to where you are. No matter what others say, you only have yourself. No one else. वैसे में एक तरह से पूछने का ट्राई कर रहा था कि आप इस पोजीशन पे पहुंची तो आपका हेड कौन है, लेकिन इसने बताया नहीं। ये निंग अपनी तारीफ करी थी कि मैं जब यहाँ आई थी मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन इतनी ऊंचाइयों तक मैं सिर्फ अपने वजह से पहुंची हूँ, किसी की मदद से नहीं। Everything prospers when family is harmonious. Family? The word has no meaning. The notions, even more so. Only the self hears the deepest whispers of your soul and accepts you whole. No one lives alone. But we die lonely. In the end, we are absolutely, simply, truly alone. तो ये बोल रही थी कि हम सब अकेले जीते, लेकिन बासिम ने बोला कि कोई भी अकेला नहीं रहता है। तो निंग ने बोला कि ठीक है अकेला नहीं रहता, लेकिन मरते हम लोग अकेले ही हैं, हमारे साथ कोई नहीं रहता है मौत के टाइम। तो इसको तो मार दिया है, लेकिन ऑर्डर का हेड कौन है ये नहीं पता चला। और अब टाइम हो गया है जिन के आने का। आ जाओ फिर। Return to the bureau. यहाँ से भागना होगा, गार्ड्स भी आ गए हैं। She's dead! The guards! Help! Someone killed the treasurer! इतना अच्छा मैं ट्राई कर रहा था ऊपर से निकलने का, लेकिन यहाँ से भागने का कुछ है नहीं। Watch the horse, son! Blood will flow! God, don't let him go! Come on, fight again! Someone is going to pay for this! What's that here? Where is it coming from? Can I watch the horse, son? Blood will flow!
Good one! I am inevitable! Someone is going to pay for this! तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव है कि मास्टर रोशान और रेबेका को जाके बताना है कि खजांची मर चुका है और वो जो फाइनल हेड है उसी को ढूंढना होगा, क्योंकि उसी को ढूंढ के मारने से पहले उससे सारे राज जानने हैं कि ये ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स प्राचीन सामान निकाल कर मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं, प्राचीन दुनिया में जाकर इनको क्या करना है और इन सब चीजों का बासिम से क्या कनेक्शन है और उसको ये जिन क्यों नजर आ रहा है। ऐसे मास्टर रोशान तो बोलती है कि ये सिर्फ बुरा सपना है, लेकिन बुरा सपना है नहीं। तो जो भी है चलते हैं ब्यूरो और जो फाइनल मिशन है उसको स्टार्ट किया जाए। अच्छा, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे यानी कि मैंने पूरा गेम कंप्लीट करके वीडियो अपलोड कर दिया है, तो ये बात याद रखना कि आप ये जब वीडियो देख रहे हो तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये जो इतना बड़ा वीडियो है, इतना बड़ा गेम प्ले मैंने अभी तक चैनल पे नहीं बनाया और इस चीज के लिए मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था एक बार में इतना बड़ा गेम प्ले बनाने का। तो इस वीडियो के बाद ये चीज भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये वीडियो से मैं काफी खुश रहूंगा, पता है। Basim, how did you fare? The streets are alive with talk about the auction. Rumors spread quickly. It was this woman, Ning. A woman holding the reins. She must have angered many. Angered and enthralled, in equal parts. It is no wonder she kept her identity hushed. Now the upper echelons of affluent louts are soiling their silk robes, wondering if they are next. The order will not stop here. If they have reached the east, then there is no telling how far they will spread. मास्टर रोशान को ये नहीं पता है कि सारे ऑर्डर के मेंबर को मार दिया, सिर्फ उनका हेड बचा हुआ है। Did you see it? The Jinni? It is gone now. It is gone. Rest while you can. Our work is not done yet. तो मास्टर रोशान बासिम से पूछे थे कि फिर से देखा क्या जिनी, तो बासिम ने बोल दिया कि नहीं अभी तो चला गया है। तो मास्टर रोशान ने बोला कि आराम करो जब तक कर सकते हो, क्योंकि हमारा काम अभी दूर दूर तक खत्म नहीं हुआ है, अब बस उस लास्ट ऑर्डर के मेंबर को मारना है। Easy, Basim, I am here. बासिम का सोना मुश्किल कर दिया भाई जिन ने। निहाल लेकिन सही टाइम पे आ गई उठाने के लिए। Basim, تمهل. I cannot keep them waiting. Are they aware, your companions, that their hunter is hunted in his sleep? If it were in my sleep alone, I could bear it. But it followed when I fled Anbar. Now it stalks me when I slay those I hunt. The ones from the palace, in the masks. 4 are dead at my hand. The last, the head of the snake, will join them soon. Why slit its throat when you could loosen its tongue? What? Why would I? The Jinni only struck in sleep. It never dogged you by the day until you reached into that chest. The masked ones prize what lay within. The ancient object that woke at your touch. They may hold more answers living than dead. I hunt my enemies. I do not break bread with them. I took an oath, Nihal. How can you hunt when you are hounded? If you could walk the dark unburdened, you could better serve the light. I stay my blade from the flesh of the innocent, not from the order of the ancients. If you will not ask your foes, then at least ask your friends what slept in that chest. And why they sought it. तो निहाल का सजेशन है कि ऑर्डर के हेड को मारूं नहीं, पर उससे सवाल जवाब करूं, लेकिन बासिम इस चीज के लिए तैयार नहीं है। My companions wait for me at the Harbiya Bureau. Clear your mind, Basim. Focus on the task before you.
2.25 घंटे के बाद मैं उठ के आया हूँ, थोड़ा पानी वानी भी पी लिया है। तो निहाल देख रही थी कि बासिम सपने से बहुत ज्यादा परेशान है उस जिन की वजह से, इसलिए बासिम को बोल रही थी कि थोड़ा आराम से बासिम, आराम से। लेकिन बासिम ने बोला कि मैं अभी रुक नहीं सकता जब तक मैं उसको मार नहीं देता, यानी कि ऑर्डर के हेड को। तो निहाल पूछने लगी कि एक बात बताओ, तुम्हारे दोस्तों को पता है कि उनका जो शिकारी है उसका खुद शिकार हो रहा है? तो बासिम बताने लगी कि जब तक ये जिन मेरे सपने में आता था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मैं जहाँ जाता हूँ ये मेरे साथ रहता है, और खास करके मैं जब भी ऑर्डर के मेंबर को मारता हूँ, 4 को मारा है, और मारते के साथ ये जिन आ जाता है मुझ पे हमला करने के लिए। और बासिम ने बोला कि इन सांपों का जो मेन हेड है अब उसको मैं मारने जा रहा हूँ। तो निहाल ने बोला कि सांप को मारने की क्या जरूरत है जब तुम उसका जहर निकाल ही सकते हो? तो बासिम ने बोला कि तुम बोलना क्या चाहती हो? तो निहाल ने बोला कि इनका जो हेड है उसको मारने से अच्छा ना उससे पूछो कि वो क्या जानता है इन प्राचीन चीजों के बारे में, क्योंकि जब तुमने वो पैलेस में छुआ था वो सामान, उसके बाद ही ये जिन तुम्हारे सपने से निकल के बाहर दुनिया में आ गया है। तो बासिम बोलने लगा ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपने दुश्मनों को मारता हूँ, ना कि उनके साथ चाय पानी पीकर उनसे बातचीत करता हूँ। तो निहाल ने बोला कि ठीक है, अपने दुश्मनों से मत पूछो, लेकिन अपने दोस्तों यानी कि हिडन वन से पूछो कि इस सामान के पीछे क्या राज है और उनको ये क्यों चाहिए। You took your time. Did you wait up, Master? I wait for no man. You look tired. Nothing a little adventure won't fix. What news? Ali thinks the time is right to attack the palace. The Oyun are distracted and the people divided. Divided how? Some are claiming the new Khalifa stole the throne from Abu Abdullah, son of Al-Mutawakkil. What do you know of him? Little. He was there at the palace the night his father... The night I reached into that chest. Master, have we learned anything more about the object within? Why do you ask? It seems a shame we know so little about something the Order prized so much. Should we not seek to know our enemies better, the better to defeat them? Marhaban, Basim. Have I interrupted? No. We must turn to the task at hand. Of course, Abu Abdullah. Rebecca tells me you have met his mother, Qabiha. I did. I think she could be first among our foes. She, or Arib the poet, or Muhammad the governor. All three had ties to our enemies. Muhammad ibn Tahir. His cousins govern the land on which Alamut sits. Their protection is all that shields us from our enemies. I cut our enemies' legs beneath them, Master. Let me strike while their stumps are bloody. I will unmask them and learn their intent. Basim is right. We must act swiftly. Go to the Round City. Investigate all three, but take no further action. Reports back to me atop the house of the previous hill. तो बासिम आकर मास्टर रोशान से पूछ रहा था कि अब क्या इन्फॉर्मेशन है आगे। तो मास्टर रोशान बोलने लगी कि रेबल्स के लीडर अली को ऐसा लगता है कि अभी अटैक करने का बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि खलीफा का जो बेटा था ना अब्दुल्ला, उससे कोई नए खलीफा ने गद्दी छीन ली है, और इसी वजह से राज परिवार के लोग आपस में बटे हुए हैं, इसलिए अभी हमला करने का सही टाइम है। और बासिम ने मास्टर रोशान और फुलाद को बताया कि 3 लोग ऐसे है ना जिन पे मुझे शक है कि वो हेड ऑफ द ऑर्डर से मिला हुआ है, और अभी हम लोग बाजार में जिससे मिले थे ना कबिया से, उनके बारे में अभी पता चला है कि वो अबू अब्दुल्ला की माँ है। तो इन पे शक है बासिम को, प्लस वो जो फेमस पोएट है अरीब, उन पे शक है, और गवर्नर ताहिर पे शक है। Poet, politician and concubine. I will soon know which one wears the mask. अच्छा, बासिम को ये लगता है कि इन तीनों में से कोई हेड ऑफ द ऑर्डर है। और हिडन वंस की जो मेन लोकेशन है एलमट, जहाँ पर बासिम ने भी ट्रेनिंग ली थी, उसके बारे में फुलाद ने ये बताया कि गवर्नर ताहिर का कजन उस जगह पे राज करता है, और एलमट उन्हीं की प्रोटेक्शन के अंडर में है, इसलिए जो भी करना है यहाँ से संभल के करना। और मास्टर रोशान ने बोला है कि सिर्फ पता करना, किसी पे कुछ हमला मत करना और कोई भी एक्शन मत लेना, मुझे बस रिपोर्ट करना। तो अभी काम है एक एक करके तीनों को ढूंढना और तीनों को इन्वेस्टिगेट करना, पर इससे पहले फुलाद के पास इन तीनों लोगों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। Fulad, my finder of facts, my fielder of questions. How can I be of help, Basim? अच्छा, तीनों के बारे में एक एक करके पूछते हैं। Tell me about Arib. Her words were as scripture to members of the order. A gifted artist and poetess, Arib won her freedom through her skill. Tabit tells me she keeps a luxurious home in the Round City. Anything else? What do you know of Qabiha? She had ties to the treasurer. Born to slavery, Qabiha rose to become Al-Mutawakkil's favorite concubine in the harem. Yet her son was not made Khalifa, leaving her future uncertain.
Anything else? Tell me about the governor. I saw him give orders to Wasif at Turkey. Muhammad is one of the Tahirids, powerful viceroys of the Khalifas in Persia. He governs all Baghdad from his seat at the courts. Anything else? Where can I find our suspects? All three live within the glorious round city, the power center of the Abbasid Khilafah. Anything else? तो तीनों के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल गई, यहां से निकलते हैं। शुक्रान फुलाद। तो ये तीनों रहते हैं राउंड सिटी में, ठीक है। तो स्टार्ट किससे किया जाए? गवर्नर ताहिर से स्टार्ट किया जाए। तो गवर्नर ताहिर के बारे में याद है ना, वो एक ऑर्डर के मेंबर को कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उस ऑर्डर के मेंबर ने गवर्नर ताहिर को धमकी दी थी कि मैं किसी की बात नहीं मानता, तो इसलिए दोबारा जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। और अली को विश्वास है गवर्नर ताहिर के ऊपर कि वो बहुत अच्छे आदमी और उनको दोस्त भी बनाना चाहता है अली। पर बासिम को ये लग रहा था कि ये इतने पावरफुल गवर्नर है, तो ये अपने से नीचे वाले ऑफिशियल से ऐसे डर के क्यों बात कर रहे हैं? तो हो सकता है कि ये ऑर्डर के मेंबर हो। तो चलो जो भी है इन्वेस्टिगेट करते हैं उनको चलकर। तो गवर्नर ताहिर के घर तक पहुंचने के लिए ना ये जो गार्ड से भरी हुई दीवार है इसको पार करना होगा। तो ट्राई करेंगे कि चुपचाप से निकल जाएं, लेकिन अगर कोई दिखा तो मारते हुए जाएंगे। अच्छा खासा मैं जा रहा था चुपचाप से, तू भी बाकी सब गार्ड्स की तरफ पीछे मुड़ के खड़ा रहता, मरता नहीं ना। अच्छा असैसिन फोकस खत्म हो गया है, कहां से यूज करेंगे? अच्छा ये देखकर ऐसा लगे कि घुटने में जबरदस्त चोट लगी होगी बासिम को, नहीं? अच्छा ये गवर्नर ताहिर का एक कोर्ट है, वहां जाके उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। Lend me your eyes. Not the warmest of receptions. अच्छा ये चीज मैंने देख लिया कि 1-2 घंटा गेम का खत्म क्या हो गया, उसके बाद से इन कीड़ों को ये लोग बिना मुश्किल के उड़ाने देते ही नहीं है। पहले चिड़ी मार जो है निशानची उसको मारो, उसके बाद ही इन कीड़ों को उड़ा सकते हो। The Madalim courts are close. Derwish once told me it is where the commons can appeal when justice itself is dealt unjustly. My father once said, to know the measure of a man, ask those who work beneath him. These judges must know the governor better than most. तो बासिम के पापा ने बोला था कि अगर किसी इंसान के बारे में अच्छे से जानना है तो उसके नीचे जो लोग काम करते हैं उनसे उस इंसान के बारे में पूछो। तो इस कोर्ट में जो जज है वो गवर्नर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। Greetings, Sayyidi. I wonder if I could ask you some questions about the governor, Muhammad ibn Tahir. I am not underpaid to answer questions. I suggest you make this worth my time. Otherwise... बिना रिश्वत लिए कोई मानता नहीं है। Would you accept this token of appreciation from a humble citizen? I would. As a start. ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको और रिश्वत चाहिए। ले भाई ले ले। I serve justice, not spoil it. Take your money. Now, what do you know about the governor? He's feared, respected, dedicated to the rule of law, order. That is all you know. You work here. Muhammad ibn Tahir keeps office at the courts. At the shorter courts, not the Mathalim. He does keep spies here,
One scuttles back to his office every day at noon. Goodbye now. तो यहाँ पर गवर्नर ताहिर ने ना अपने कुछ जासूस छोड़ के रखे हुए जो कि उनके ऑफिस पे हमेशा जाते हैं। तो अगर वो जासूस मिल गया अपने को तो उसको फॉलो करके उनके ऑफिस पहुंच सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले उनके जासूस को ढूंढना होगा। तो गवर्नर ताहिर का जासूस ना दोपहर में आता है, इसलिए टाइम पास करके दोपहर करना होगा ताकि वो आए तो उसको फॉलो कर सके। That messenger could lead me to the governor's office and whatever secrets he buries there. तो बासिम सोचा कि ये जो जासूस है ये गवर्नर ताहिर तक ले जा सकता है और उनके जो राज छुपे हुए हैं वो भी अपने को मिल जाएंगे, लेकिन इसको ऐसे फॉलो करना है ना ताकि ये देखे नहीं। तो ये फॉलो करने वाला मिशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना, बस छुप के रहना है क्योंकि ये अचानक से घूम घूम के चेक करेगा कि इसको कोई फॉलो कर रहा है क्या। अच्छा ये ऐसे अचानक से नहीं घूमता है, रुक जाता है ताकि टाइम मिल जाए छुपने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ आज ये गेम इतना खेल लिया है ना, अब ऐसी कोई फूल वाली झाड़ी दिखी ना गार्डन वार्डन मैं भी अंदर जाके छुपने लगूंगा। देख लिया ना लापरवाही का नतीजा, ऑलमोस्ट इसने देख ही लिया था। अगर कवर ब्लो हो जाता तो मिशन फेल था, बच गया। There. Now focus, Basim. Do not lose them again. ये गेम का ऐसा लग रहा है कि मैंने जासूस को भुला दिया, मेरी नजरों से वो हटा नहीं है, लेकिन जो भी है फॉलो करते रहते हैं। एक मिनट, मैं इसको ऊपर से भी तो फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसने गली बदल ली और वहां पे कूदने का कुछ नहीं रहा तो चलो देखते हैं ना, ऊपर से फॉलो करने का ट्राई करते हैं। Broke my line of sight. अच्छा ऊपर से फॉलो करने से एक तरह से फायदा भी है, ये पीछे घूम के देखेगा, छुपने की जरूरत नहीं है अपने को। Stay alert. Something is amiss. Yes, Saeed. अच्छा वो नीचे से नहीं गया, ये गार्ड्स को बोलते हुए गया कि अलर्ट रहो, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। Found you. तो ज्यादा ही लंबा ये फॉलो नहीं करवा रहा है भाई, कहाँ लेके जा रहा है? पीछे तो ये मुड़ के देखने वाला है, ऊपर नहीं देखे ना, ऊपर नहीं देखेगा। अच्छा इतने फेमस गवर्नर का हेडक्वार्टर है तो सबको तो पता ही होगा कि कहाँ है, तो अब लोग पूछ के भी तो आ सकते थे, लेकिन चलो ठीक है फॉलो करके पहुंच ही गए।
Darwish always warned me I would be dragged to the Shorta. Who would have imagined I would walk in willingly? तो डरविश हमेशा बासिम को बोलता था कि तुम्हें घसीट की इस कोर्ट में ले जाया जाएगा, और वही बासिम बोल रहा है कि किसने सोचा था कि मैं अपनी मर्जी से अंदर जाने वाला हूँ। तो 2 स्किल पॉइंट मिले भाई, जो बचा हुआ है सबको ले लेते हैं। और अंदर जाने के लिए ना मेरे पास एक प्लान है। ये जो सामने लोग खड़े हुए हैं उनको टोकन देकर गार्ड्स पे हमला करवा देते हैं। Take out the horse's legs, Sold for hire. then pick them off like the fleas they find. I require reinforcements. Standing by for orders. Yes! You see? Isn't this तो अंदर तो आ गए, लेकिन गवर्नर का ऑफिस ढूंढना होगा कि वो कहां पर है। I'll finish you! Dare you! तो ये जो गार्ड दिख रहा है ना जिसके पास चाबी है, वही ऑफिस की चाबी होगी और क्या। अच्छा, लेकिन ये अकेला नहीं और दरवाजे भी बंद करके रखे हुए हैं। ऐसे जगह से जाना होगा ना ताकि ये लोग देखे ही नहीं। Hold on! Damn you! Not Abu Abdallah's stuff is so bad. The damn rebels. This is all we can do to keep riots from breaking out. Governor has a plan. You will see us through this storm. एक मनहूस गार्ड ने देख लिया भाई, वरना इसको डायरेक्ट में मार देता, लेकिन अब नीचे ही उतर के मारना होगा। I see you. I'll summon aid. Got you! Time to rinse the meat. Stone! All right, I have this. There you are! What is that? All this dust. Smoke! Smoke come from. Onyx battle. You are mine. ये तो बात है भाई, दाद देनी पड़ेगी इन लोगों की। इतने लोगों को मारा, फिर भी आ रहे हैं लड़ने के लिए। तो चाबी उठा लेते हैं ऑफिस की, लेकिन ऑफिस है कहाँ? इन गार्ड्स ने कुछ लोगों को कैद करके रखा हुआ है। Poverty was my only crime. Free me, Dane, please. इनका कहना है कि हम गरीब हैं, यही हमारा जुर्म है, इनको आजाद कर देते हैं। Alhamdulillah. في أمان الله يا صديقي. तो इन सबको आजाद कर दिया। अब गवर्नर के ऑफिस चलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने, लेकिन गवर्नर का ऑफिस है कहाँ? तो मैंशन में ऑफिस कहाँ हो सकता है? ऊपर ही फ्लोर में ना। चलो एक बार चेक करते हैं ऊपर चलकर। कितने भी गार्ड्स को मार लो, लेकिन एरिया पूरी तरह से खाली नहीं होता है। कुछ एक आध गार्ड्स बच ही जाते हैं। तो गवर्नर ताहिर का ऑफिस मिल गया। अब यहाँ जाके ये इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या ये भी ऑर्डर के मेंबर है। मेंबर क्या मतलब, अब तो हेड ही बच गया है। तो ये देखना है कि क्या ये ऑर्डर के हेड हैं। Muhammad ibn Tahir's office at last.
Ocean, desert, cobra, dove. It seems he is an admirer of Arib the poet. अच्छा, वो जो पोएट है ना अरीब, उनकी भी कविता यहाँ पे लिखी हुई थी। तो बासिम सोचा कि गवर्नर ताहिर को भी लगता है कि पोएट अरीब पसंद है। ऐसे अभी पोएट अरीब को भी इन्वेस्टिगेट करना ही है कुछ देर में। The governor has been tracking the rebels and the hidden ones. तो गवर्नर ताहिर रिबल्स और हिडन वंस को ट्रैक कर रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इनको हिडन वंस के बारे में कैसे पता है? The Tahirids agreed to withdraw their protection from Alamut at the governor's request. The hidden ones are betrayed. तो गवर्नर ताहिर ने अपने कजन को बोल दिया कि एलिमेंट से अपनी प्रोटेक्शन हटा लो, और इसलिए बासिम बोल रहा है कि हिडन वंस के साथ धोखा हुआ है। तो बासिम का शक यकीन में बदलते जा रहा है। You can tell your masters I've had copies made. Shred that page, slit my throat. Our bargain stands. My masters? The masked cabal, the order of... I don't care. Are you not in their service? Are you not in their service? I serve the Khalifa. I serve Allah. And I do it without hiding my face. Now, if you'll excuse me. Why were you giving commands to Asif at-Turki, a member of the order? The brute was stoking the fire of 1,000 rebellions. Thankfully, someone spared me the trouble of putting him down. A hidden one, I heard. Are you the one to thank? I read your letters. You forced your cousins to remove their protection from Alamut. You sold us to our enemies. And brought peace to Baghdad. You've already helped yourself to the receipt. Abu Abdullah's oath of allegiance. What does he have to do with anything? His ambition would have torn the Khalifa apart. I offered the Order Alamut. They gave me assurance he'd threaten us no more. So to trap a fox, you loose a wolf. The Order will see Baghdad burn, Governor. History will judge you for this. History can hang me for it. I'll leave this world knowing that there is courage in compromise. There is also cowardice. How old are you? 20? I was about your age when I came to this city. Righteous beyond reproach. What happened? I grew up. If you really wish to spare Alamut, turn that blade on your enemies. Give me their name. The one you brokered the deal with. I could. But if you fail, then I die. And I'd prefer not to. Now, I have things to do. No hard feelings. Guards! तो गवर्नर ताहिर ऑर्डर के मेंबर नहीं है, लेकिन इन्होंने गार्ड्स बुला लिया, भागना पड़ेगा। So the day ends with you fleeing the shurta after all. भागने, लेकिन भागने की क्या जरूरत है? जो भी गार्ड्स आएंगे उनसे लड़ ही लेंगे। कितने गार्ड्स आएंगे भाई? कोई आ भी रहा है? ले, सब अपने अपने जगह पर हैं। पता नहीं कोई गार्ड आया भी नहीं। तो गवर्नर ताहिर से बासिम ने पूछा कि मैंने आपको देखा था वासिम को ऑर्डर देते हुए, और वो ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स का मेंबर है, तो आप उसको ऑर्डर क्यों दे रहे थे? तो ताहिर बोलने लगे कि वो गुंडागर्दी कर रहा था रिबेलियंस के साथ, जिसकी वजह से रिबेलियंस और भड़क रहे थे। एक काम करते, पहले यहाँ से भागते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो गवर्नर ताहिर बोल रहे थे कि किसी ने अच्छा किया सेनापति वासिम को मार के, और मैंने सुना है कि हिडन वन ने मारा है। क्या तुम वही हो जिसको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? Order or no, Governor Muhammad is no friend to the hidden ones. तो बासिम ने गवर्नर ताहिर से दूसरा सवाल पूछा कि आपने अपने कजन को क्यों बोला, मतलब एलिमेंट से अपनी प्रोटेक्शन हटाने के लिए? तो वो बोलने लगी कि देखो, ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स हमला करते बगदाद में, तो अगर मैं वहां से अपनी प्रोटेक्शन हटा लेता उनके कहने पर, तो फिर वो बगदाद में हमला नहीं करवाते। तो बासिम भड़क गया, बोला कि इतिहास इस चीज के लिए आपको हमेशा याद रखेगा कि आपने कितना गलत काम किया है। तो ताहिर ने बोला कि देखो, इतिहास कुछ भी बोले, मुझे इतना पता है कि हिम्मत चाहिए समझौता करने के लिए। तो बासिम ने बोला कि हिम्मत के साथ साथ
डरपोकी भी रहती है समझौता करना। और गवर्नर ताहिर बोलने लगे कि अगर अपने दुश्मनों को मारोगे तभी तुम एलिमेंट को बचा सकते The हो। guards will be ever vigilant. और बासिम गवर्नर ताहिर से उन लोगों के नाम पूछा था जिनके साथ इन्होंने समझौता किया है, लेकिन गवर्नर ताहिर का कहना था कि अगर तुम नाकामयाब हुए तब वो लोग मुझे मार देंगे, तो इसमें मेरा क्या फायदा है। तो उन्होंने नाम भी नहीं बताया और इसलिए बासिम सोचा था कि चलो भले ही गवर्नर ताहिर ऑर्डर के मेंबर नहीं है, लेकिन ये हिडन वंस ग्रुप के भी कोई दोस्त वोस्त नहीं है। तो 3 लोगों में से एक को इन्वेस्टिगेट कर लिया। अब जा रहे हैं पोएट अरीब के पास, जिनकी पोयम पता नहीं बहुत ही जगह पाई जाती है। तो चलो फिर देखते हैं कि ये पोएट हेड है या फिर हेड के बारे में कुछ जानती है। They say the harem is home to hundreds, secluded and kept from sight of men. This place may be more secret than Alamut. तो ऐसे तो हम जा रहे थे पोएट अरीब को इन्वेस्टिगेट करने, लेकिन अभी खलीफा के हरम में आ चुके हैं। They say no man may enter the harem unless he is a eunuch or the Khalifa himself. I am neither, so this could be interesting. तो इस हरम के अंदर खलीफा की बहुत सारी बीवियां हैं, लेकिन इसके अंदर कोई आदमी नहीं जा सकता है। पर इसी हरम के अंदर वो कबिया मिलेंगी जिनका बेटा राजा बनने वाला था, लेकिन उनकी जगह कोई और राजा बन गया है। तो कबिया पे भी बासिम को शक है, तो उनको भी इन्वेस्टिगेट करना है, पर हरम के अंदर जाएं कैसे। तो खलीफा की जितनी भी लवर्स है सब इस हरम के अंदर, इसलिए किसी भी आदमी को अंदर जाना अलाउड नहीं है। या तो खलीफा खुद जा सकता है या फिर कोई यूनक भी जा सकता है अंदर। तो बासिम यही सोच है कि अंदर जाए तो जाए कैसे। Let us get a wider view. तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा क्लू है ना जो अपने को अंदर ले जा सकता है, कोई खुफिया रास्ता या कोई ऐसा आदमी जो अंदर एंट्री दिलवा सकता है। अच्छा ये मत पूछना कि भाई हरम के अंदर गार्ड्स भी तो है, वो भी तो आदमी है, तो गार्ड से इसलिए अंदर है, कोई आम आदमी नहीं जा सकता है। That person looks suspicious. I should investigate. तो बासिम को किसी आदमी के ऊपर शक हो रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, ये दरवाजा तो साफ साफ दिख ही रहा है, यहाँ से जाने नहीं देगा। Do not even think about it. Keep walking. That was friendly. I will have to find another way in. तो गार्ड ने डरा के बोला कि गलती से अंदर आने की सोचना ही मत, बढ़ते रहे आगे। तो बासिम ने बोला कि वाह क्या दोस्ती भरे तरीके से बोला है मुझे, कोई और रास्ता ढूंढना होगा अंदर जाने के लिए। अच्छा ये जो अंदर लड़कियां हैं ना, इनकी बातें सुननी है। ठीक है। Her influence wanes. Her followers dwindle by the day. Kabiha is a great woman, Farah. She was, while Al-Mutawakkil lived, but her son did not succeed him, and her time has come and gone. When the tide ebbs, will you be swept with it to the sea? I do not like to get involved in politics, Nasreen. Please. We know what you are. Enough! The new eunuchs will be arriving any minute. Meet them at the gate, Makira, and try not to make a mess of it. Come, Nasreen. New servants mean new faces in the harem. If I had a eunuch's uniform, I could slip in among them. तो तीनों लड़कियों की बात से अपने को 2 इन्फॉर्मेशन पता चली, जिसमें से एक इन्फॉर्मेशन तो अभी काम की है, और वो ये है कि हरम में ना कुछ नए यूनिक्स आने वाले हैं, यानी कि उनको कोई पहचानता नहीं है। तो अगर बासिम यूनिक के कपड़े पहन लेता है तो वो हरम के अंदर इंटर कर सकता है। तो ये जो कपड़े ये पहले ढूंढने पड़ेंगे। और दूसरी काम की बात ये पता चली ना, ये फरा और नसरीन नाम की लड़की मकीरा नाम की लड़की को बता रहे थे कि कबिया का ना इन पहुंच अब बगदाद से खत्म हो रही है, और उनका बेटा राजा तो बना नहीं। Survey the area, Enkidu. तो नसरीन और फरा मकीरा को बोल रहे थे कि कबिया के खिलाफ हो जाओ, लेकिन मकीरा सीधी टाइप की लड़की, इसलिए उसने बोला कि मैं ये सब षड्यंत्र में साथ नहीं दूंगी। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन वो कपड़े कहाँ मिलेंगे अपने को। तो हरम के अंदर जाने के लिए ये जो 2 लोकेशन मार्क किया है ना, यहाँ से जो भी कपड़े और जो भी सामान है सब उठा लेते हैं और फिर बासिम अंदर जा सकता है। چرا حواست رو جمع نمی‌کنی؟
A eunuch's uniform freshly tailored. Perfect. How long is this? Looks ready to me. तो जैसे भेष बदल के फाजिल को नहीं मारा था, वैसे ही भेष बदल के अभी अंदर भी जा सकते हैं। तो कपड़े तो ले लिए, लेकिन कोई और सामान भी बाकी है, उसको भी उठा लेते हैं। Hey, get away. तो इससे पहले हम लोग अंदर जाएं, कपड़े चेंज कर ही लेते हैं। A bit tight across the chest and gut. तो बासिम को ये कपड़े चेस्ट और पेट के पास थोड़े टाइट हो रहे हैं, लेकिन अब जो भी है, Hopefully this will work. Tamahel, do I know you? I doubt you would. This is my first day. I would hate to be late. Makira! Assalamu alaikum! You know him, Makira? What? You have forgotten me already? No, I'm sorry. It has been a long... That is all right, fair one. My face is quite forgettable. Unlike your own. तो यही है वो सीधी लड़की मकीरा, इसकी तारीफ भी कर दी। Farah is expecting me. Between us, she terrifies me. Please do not make me late for her. Let him in, Abbas. तो मकीरा को ये झूठ बोलने लगा, बासिम कि इतनी जल्दी तुम मुझे भूल गई। Barakallahu fiki, Sayyidati. तो और बासिम बोलने लगा कि मेरा चेहरा है ही ऐसा भूलने जैसा, लेकिन तुम्हारा इतना अच्छा चेहरा है कि उसको कोई भूल नहीं सकता। और तारीफ सुन के मकीरा खुश हो गई और बासिम ने बोला कि देखो, फरह से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए प्लीज मुझे अंदर आने दो, क्योंकि लेट हो रहा है बहुत। तो अब अंदर आने के बाद काम है कबिया के ऑफिस को इन्वेस्टिगेट करना। इसकी चाबी तो है नहीं मेरे पास। What are you doing? अरे रे, मकीरा ने रंगे हाथ पकड़ लिया। Makira, I was just breaking into Kabiha's office. You are no eunuch. Leave now, or I'll tell Nasreen. I'll tell Farah. Tell them what? That you let me in here? I cannot imagine they will be pleased about that. You are a kahramana, no? You serve the concubines every need. When is the last time someone asked what you needed? Someone who would not judge. Someone you could forget was ever here. There must be something you need, Makira. Or want. There is something. Abbas at the gate. He has eyes for Farah. The Walad. He doesn't look at me. But Farah uses a paint to make her eyes bigger. And if I could have some, I think he might... Say no more. I am at your service. Where can I find this paint? The storage room, but no one is allowed in. Apart from Nasreen. Farah trusts her with everything, even her magic potion. Farah has a magic potion. She has Nasreen carry it. Tells her when she wants a sip. It makes her breath foul. Still, I'd give anything to try it myself. And so you shall. And in exchange, Makira, what will you give me? The key to that office. Eye paint and magic potion. Your wish is my command. तो अगर कबिया के ऑफिस की चाबी चाहिए तो मकीरा को जो सामान चाहिए उसको लाके देना होगा पहले। Eye paint and magic potion. Seriously? तो मकीरा समझ गई कि बासिम को यूनिक नहीं है और ये गार्ड्स को बुलाने वाली थी। तो बासिम ने बोला कि गार्ड्स को बुलाकर क्या बोलोगी कि तुमने मुझे अंदर बुलाया। और ये सुनकर तो नसरीन और फरा खुश नहीं होंगे। So what is this magic potion? Ah, I see. Alcohol. तो बासिम ने मकीरा को बोला कि देखो तुम यहाँ पे काम करती हो, तुम सबकी जरूरत पूरा करती हो, लेकिन तुम्हारी भी तो कुछ जरूरतें होंगी, तो मुझे बताओ, मैं पूरा कर दूंगा और उन चीजों के लिए मैं तुम्हें जज भी नहीं करूंगा और मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा। तो फरा को एक लड़का पसंद करता है और मकीरा चाहती है कि वो लड़का इसको पसंद करे और इसलिए फरा जो आई पेंट लगा के अपनी आंखें बड़े करती है वो आई पेंट मकीरा को चाहिए। Bigger eyes might add to my disguise. No, focus, Basim. You need that key. Paint and potion acquired. Now to get that key. और मकीरा को वो मैजिक पोशन भी चाहिए था जो फरा पीती है और वो मैजिक पोशन नसरीन के पास था और वो और कुछ नहीं बल्कि दारू था। तो दोनों चीज ले लिया, अब मकीरा को दे देता है। Here you are. Oh,
Thank you. The others say I'm too young for paints and potions. But I'm not too young to know why they use such things. Of course not. Now the key. They only know more than me because they've all read this book. The Garden and its Mysteries. It's all about biology, the body, its secrets. It is quite infamous. Have you read it? No. Farah keeps it in the Khalifa's quarters. They're on the roof, and strictly forbidden. Makira, we had an agreement. Please, if you could just get the book and bring it to my room? It's in the east corner on the left. Oh, fine. But then the key. Paint, potion. Now she has me fetching body books. I meant to play a servant, not be one. तो मकीरा की डिमांड यहाँ पे खत्म नहीं हुई। इसको एक किताब भी पढ़नी है जिसका नाम है गार्डन एंड मिस्ट्रीज, पता नहीं जो भी है। और बासिम ने ये किताब पढ़ी नहीं और इसने बताया कि फरहा ये किताब खलीफा के ऊपर में एक रूम है वहाँ पे रखती है, तो उस रूम से किताब लाके मकीरा के रूम में रखना है। और बासिम भी इरिटेट हो रहा है कि मैं नौकर बनने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, सही में नौकर बना दिया इसने। पर कबिया की ऑफिस की चाबी चाहिए तो किताब तो लानी पड़ेगी और मेरे पास कोई वेपन्स भी नहीं है, यानी कि हाथ से मारना होगा इन गार्ड्स को। और सबसे बुरी बात ये है कि बासिम सीटी भी नहीं बजा रहा है। सीटी क्यों नहीं बजा रहा है भाई? मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये सीटी नहीं बजा रहा है। वाह, ठीक है, तो ऐसे में दौड़ के जाऊंगा तो लड़ूंगा, हाथ से लड़ना पड़ेगा शायद। और कोई ऑप्शन तो नजर नहीं आ रहा है, यहाँ से छुप के जा नहीं सकते हैं। तो ये गार्ड जब तक समझ पाता है इसके साथ कांड हो गया और बासिम के पास हिडन ब्लेड है। और यहाँ आने के बाद आई थिंक कि बासिम सीटी बजा सकता है, पता नहीं, कोशिश करेंगे कि कोई गार्ड नहीं देखे, वरना अगर कवर ब्लो हो गया तब फिर दोबारा नीचे नहीं जा पाएंगे। वो जो दूर में खड़ा हुआ गार्ड है उसको थोड़ा सा तो शक हुआ। डील यही थी कि 2 सामान लाके दूंगा मकीरा को, वो काम कर देगी, लेकिन वो अपना डील बढ़ाते जा रही है। तीसरा काम करवा लिया मुझसे। Quarters fit for a Khalifa. बासिम इस कमरे को देखकर बोल रहा है कि खलीफा के रहने लायक कमरा है ये। The Garden and its Mysteries. Not much spice to the title. I guess that was the idea. ये गार्डन और उसकी मिस्ट्रीज, ये रोमांटिक किताब कैसे हो सकती है? मकीरा को ऐसा क्यों लग रहा है? पर अपने को क्या लेना देना? मकीरा को किताब देंगे, काम खत्म, चाबी मिलेगी, कबिया को इन्वेस्टिगेट करेंगे। देख ले गार्ड, अगर मरना नहीं है तो चुपचाप से बिना शक किए चला जा। मैं बिना मारे जाने की कोशिश करना चाह रहा हूं लेकिन ये लोग सुधरने नहीं देते हैं। तो मेरा डिस्गाइज फिर से एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर कोई गार्ड कुछ नहीं करेगा और यहाँ पर मैं अपना वेपन भी यूज नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, मकीरा को किताब नहीं देनी है बल्कि इसके रूम में रखनी है किताब। भाई इसी को दे देते। Abu Abdullah's ambition knows no bounds. Well, Farah, we cannot still believe he will take the throne. Have you met his mother?
अच्छा, ये फरा अभी भी खड़ी होके यहाँ पे कबिया की बुराई कर रही है। There you are. Enjoy. किताब रख दी भाई, अपना काम हो गया ना, निकले यहाँ से। Let us hope she does not come up with any more tasks. I think I have created a monster. तो बासिम उम्मीद कर रहा है कि ये और कोई काम नहीं सौंप दे कहीं, और बासिम अपना सर फोड़ रहा है कि भाई क्या मैंने इसको मतलब बोल दिया कि मदद करूंगा मैं तुम्हारी, ये तो अब पगला दे रही है। The book is in your room. Now... So? Are my eyes bigger? Huge. Makira, I need the key. This potion, it gives you confidence. I feel like I could take on the world. Yes, I am familiar with this potion. We had a bargain, Makira. The key. Now. Wait, you have to return the potion to Nasreen. If Farah finds out it's gone, she'll be furious. Then the key is yours, I swear. Fine. Drink some water while I am gone, will you please? This is the last time, Basim. Put your foot down. तो फरा अपनी शराब की बोतल नसरीन के पास रख पाती है, जिससे ये चुरा के लाए थे, और मकीरा बोल रही है कि उसके पास वापस कर दो, क्योंकि अगर फरा को पता चल गया कि उसकी शराब की बोतल गायब है और मुझे उसने पीते हुए देख लिया तो मुझे छोड़ेगी नहीं। Back where you belong. The potion is put back. All is right in the world. Now I will get that key from Makira if I have to pry it from her hands. तो सारे काम कर दिए मकीरा, अब अगर चाबी नहीं न दी तो अब बासिम छीन लेगा चाबी हाथ से। It is done. I am done. Thank you. Funny, I have a bit of a headache. What happens now? You give me the key. Oh, right. You do not have it. You are afraid of Qabiha. What? No. Her star is fallen. They all say it. It's just... I was having fun. Here it is. Finally. Now to find my answers. तो बहुत सारे काम करवाने के बाद फाइनली मकीरा ने कबिया के रूम की चाबी दे दी है। I remember this perfume. I smelled it in the bazaar. And perhaps in the harem. But on who? तो इस परफ्यूम की महक बाजार में भी थी और बासिम को यहाँ हरम में भी सूंघने मिली, लेकिन किसके ऊपर? A hairpin. Nings. When did Qabiha get it? तो अभी निंग को मारने से पहले उसको जो हेयर पिन दिया था वो कबिया के पास कैसे आया? उसने कब उठाया उसके मतलब मरने के बाद? A map of the Khilafa and Alamut. तो कबिया के पास एलमट का भी मैप है। इसके पास भी कोई कारण है या ये तो लग रहा है कि ऑर्डर की मेंबर है, ऐसा लग रहा है। Yet for its grandeur, the room is all but empty. Things look to be missing. यहाँ से किसी ने सामान गायब किया है। What is this? What did you give her? She always drank from it. She asked me to give it to her. It's harmless. You call this harmless, Nasreen? You should go. Now, give me the key. What happened to her? Me. Oh, भैया जी. You really shouldn't have left me alone with that flask. I'll search the rooms. You with me. I did nothing. I did not hurt her. What did you do? Relax. No one is looking at us. They will be far too busy with the book they find in Nasreen's room. Nasreen's room? The garden and its mysteries. Nothing bawdy, just a study of native herbs, their properties medicinal, poisonous, cosmetic. Belladonna, deadly nightshade. It does make the eyes look lovely in small doses. Shame I had to waste it all on her. What? You saw them? Farah and Nasreen, dripping poison in everyone's ear, spreading lies and rumors about my mistress. Qabiha. One dead, the other disgraced. No one will hear them now. Yes, Ya'la. What are you? Loyal. In Qabiha's absence, I defend her throne from those who would supplant her. Her office is empty. She has abandoned you, Makira. You serve a faithless mistress. She will return from the palace when the danger has passed. You really should not have told me that. It makes no difference.
You will never find her. Now, play nice. There are children present. ये मकीरा भाई इतनी शानी निकली ना, ये एसी मिराज का सबसे खतरनाक मिशन था, पता है? Nice uniform, by the way. Suits you. तो मकीरा सीधी होने का नाटक कर रही थी ये वफादार एक कबिया की, और क्योंकि फरा और नसरीन कबिया के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए इसने फरा को मरवा दिया और उसकी मौत के इल्जाम में नसरीन को फंसा दिया। I can do nothing for Farah. But if Qabiha is the head of the order, I could still spare those who have yet to suffer at her hands. तो मकीरा ने जो आई पेंट मंगवाया था ना, अगर उसको हाई डोज में पी लिया जाए तो वो एक जहर था। तो फरा जो नसरीन से मैजिक पोशन लेकर पीती थी ना, तो उसी मैजिक पोशन में इसने वो जहर मिला दिया। और मकीरा ने जो बुक मंगवाई थी गार्डन एंड इट्स मिस्ट्रीज, मुझे लगा भाई मैं बोल ही रहा था कि वो रोमांटिक किताब कहाँ से होगी, तो इस किताब को इसने बोला था कि मेरे रूम में रख दो, लेकिन वो रूम दरअसल में नसरीन का रूम था। और गार्डन एंड इट्स मिस्ट्रीज में इसी जहर के बारे में, यानी कि ये जो पौधा था जिसमें जहर था, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो गार्ड्स को वो किताब नसरीन के कमरे में मिलेगी और वो मैजिक पोशन नसरीन ने फरा को दिया। तो सबको ऐसा लगे कि नसरीन ने मारा है फरा को। और इसमें मकीरा खुश हो रही थी, ये जो कबिया के खिलाफ बोल रहे थे उनमें से एक मर गई और दूसरी जेल चली जाएगी, तो इन दोनों की बातें अब कोई सुनने वाला है नहीं। तो बासिम उस पे भड़क गया और बोलने लगे कि तुमने बहुत ही गलत काम किया और तुमने ये सब जो कबिया के लिए किया है वो तुम्हें छोड़ के भाग गई है, उसको ऑफिस खाली और वहाँ पर कोई सामान भी नहीं है। तो मकीरा बोलने लगी कि वो मुझे छोड़ के नहीं भागी है, वो उनकी जान पे खतरा है, इसलिए वो पैलेस चली गई है और जैसे ही वो खतरा दूर होगा तो वो महल से निकलकर मेरे पास वापस आ जाएंगी। तो बासिम बोलने लगे कि तुम्हें ये बात मुझे बतानी ही नहीं चाहिए थी। तो मकीरा ने बोला कि ये बात बता भी दी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। और बासिम हो सकता है कि मकीरा को मारता है, लेकिन वहां पर बच्चे थे इसलिए छोड़ दिया उसको। बासिम सोच रहा था कि फरा तो मर गई, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये कबिया ऑर्डर की हेड है तो इसको ढूंढ के मैं मारूंगा ताकि ये और किसी को नहीं मार सके। भाई साहब ये वाला कॉस्ट्यूम, ये पता है मास्टर रोशान टाइप का कॉस्ट्यूम है और यही असली असैसिन्स क्रीड का कॉस्ट्यूम है, पता है। तो अगर और कोई नया कॉस्ट्यूम नहीं ना मिलता है तो यही पूरा गेम में रखेंगे, मस्त लग रहा है बासिम। तो कबिया पे शक है बासिम को कि शायद ये ऑर्डर की हेड हो सकती है, लेकिन अभी एक और बची हुई है पोएट अरीब, उनको भी चल के इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओ भाई सच बता रहा हूँ, कमर की मेरी वाट लग गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो बस ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। कितना देर और बचा होगा? आधा घंटा 40 मिनट, पता नहीं। हाँ, आप लोग वीडियो देख रहे होगे, आप लोग को पता होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट खत्म ही है। बस मेन हेड आने ही वाला है, वो पता चलेगा उसको मारने में कितना ही देर लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट ये जो असैसिन्स क्रीड का नया गेम आने वाला है उसमें भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना अच्छा पार्कोर रहा है, या इसको और ज्यादा इंप्रूव करके और अच्छा पार्कोर बनाए ये लोग। What beautiful homes. Far different from the slums of Anbar. तो बासिम को यहाँ के घर काफी खूबसूरत लग रहे हैं। Cast your gaze, Enkidu. ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई निशानची नहीं, इसलिए पोएट अरीब को हम लोग आराम से ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ये बस आखिरी इन्वेस्टिगेशन है, ये कंप्लीट कर लिया तो हेड ऑफ द ऑर्डर मिल जाएगा। The home of the poetess. Adoring fans. They are very well armed if so. तो ये पोएट अरीब काफी फेमस है और उनके फैंस भी यहाँ भरे रहते हैं, इसलिए उन्होंने गार्ड्स भी रखा हुआ है यहाँ पर। Let us hope she is home. तो वैसे उम्मीद कर रहे हैं कि पोएट अरीब घर पे हो और सारे सवाल के जवाब मिल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। You will not bar me from my guests. This is my house. Fought with my generosity. But by my genius.
For tokens, favors, and personal dedications, you may find Sayyida Arib in the garden after her recital. Good day. You must be her patron. It is an honor, Sayyidi. If I may, I seek a private audience with the poetess. Do you? I have been moved beyond words by her words. Symmetry of sky and sea. I only wish to express my sincere admiration. Pretty words. Nearly as pretty as hers, and just as false. We both know what mask she wears, don't we? Mask, Sayyidi. Enough, Sayyidi. I know what you are, and I know why you've come. You think I haven't seen you skulking in the shadows. She's no longer party to your plots, your secret meetings, your foolish nicknames. I have scrubbed her clean of them. For I have set a watch on her door. My men dog her recitals. Every letter she's had of you I have shredded or sent back. Sent back? You will find them piled at the Postal Bureau. Burn them, bury them, do what you will. You can choke on them for all I care. तो पोएट अरीब से उनके इस आदमी ने मिलने नहीं दिया और ये ऐसा सोचा है कि बैसिम ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स की तरफ से आया है और कुछ लेटर्स के बारे में बताया इसने. Foolish nicknames, secret meetings. The patron may have thought me a member of the Order of the Ancients. The piles of letters at the Postal Bureau may reveal more. Let us see what mask you wear, poetess. तो पेट्रन बोल रहा था कि तुम लोगों ने जो भी लेटर भेजा है ना सब मैंने वापस भेज दिया है और वही लेटर अभी अपने को देखना है क्योंकि ये लेटर्स और किसी ने नहीं बल्कि ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के लोगों ने भेजा था पोएट को. तो उन लेटर्स से पता चल सकता है कि ये पोएट ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रही थी. The Postal Bureau. You may not enter at this hour. I will do as the Huyun do. Sift through strangers' mail and sniff out conspiracies. इतना खेलने के बाद ना ये बात मुझे पता होनी चाहिए थी कि इतने आसानी से ये लोग अंदर जाने देंगे नहीं. या तो सबको अंदर मार के भी जा सकते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि साइलेंटली अंदर जाएं. तो अंदर जाने के लिए बालकनी दिख गई है. ये देखो अटक गया. ये कभी कभी ना इसका अजीब टाइप का फंक्शन करने लगता है पता है. तो बिना मरे मानेंगे नहीं ना ये लोग. ठीक है. ये लोग अंदर वेट किए जा रहे हैं कि भाई अंदर कब आएगा. नहीं नहीं ये कर लो पहले. Now you pay! Pay attention to your master, dog! You are mine! तो जो गार्ड्स थे मर गए. अब अंदर जाके लेटर्स देखते हैं. अच्छा ऐसा है कि सारे लेटर्स नीचे रखे हुए और नीचे भी गार्ड्स भरे हुए हैं. There must be mail here from every corner of the Khilafah. Now to find Arib's. तो यहाँ पे पूरे बगदाद के लेटर्स भरे हुए हैं और इनमें से अरीब के लेटर्स को ढूंढना है. Please note that your payment of 15 dinars is overdue and must be... No. तो अभी पता नहीं किसका किसका लेटर पढ़ना पड़ेगा. Silence your song. I'll silence you! Turn and face me!
there! Silence your song of sin, or I will do it for you. How kind. Moving on. तो 2 लेटर्स मिले लेकिन दोनों नहीं थे। Abu Abdullah is the true Khalifa and will soon reclaim his stolen throne. I will leave this one for the Uyun. Dearest Arib, your poetry has... After the honey drips from her lips, a Thalab leaves the garden and follows the mouse. Secret order correspondence? Bad poetry? A bit of both? Arib could be a Thalab. The patron spoke of a recital in the gardens. I could give this letter to Arib and see where the vixen leads me. तो अरीब का लेटर मिल गया, उसको ये लेटर ले जाके दे देते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ लेके जाती है अपने को। A Thabin member is near. The Greek dogs are cunning. I will go to the garden, give a Thalab her letter, and follow where she goes. तो गार्डन में पोएट अरीब अपनी पोएम सुनाती है, उनको जाके बस लेटर देना है और उनको फॉलो करना है। I will sweeten your storm. Scorched as the desert, I will bathe in your heat. Strike as the cobra, but plunge in my breath. Be you ocean, desert, cobra, dove. All shapes and humors will I embrace. Hello there. Have we met? Come, don't be shy. I rarely bite and I never leave a mark. It seems there's no privacy in the public eye. How came you by that letter? Who put you up to this? I work in the dark to serve the light. I've met the men who serve the light. It seems its glare oft leaves them blind. Are your masters so blinkered and bumbling? You were warned, you son of a dog. Come, Arib. We will set no tongues to wagging here. Yours is the tongue that will not still itself, even when I beg for silence. You spurned the counsel of he who raised you, and without whom you would still be nothing. I raised myself. I authored myself. I have written myself into history. You are banished from my pages. Now be gone. How can I leave you to wolves such as these? You're a woman alone, unarmed. Words are weapons enough for me. Then let us see what defense they offer. Take her. There is somewhere the Sayyida needs to be, and you are delaying her. It seems that words can summon shields. We will need to make this quick. तो ये पेट्रन किडनैप करवाना चाह रहा था पोएट को, लेकिन ठीक है, इसके गार्ड्स को मारते हैं और उसके बाद फिर अरीब को फॉलो करेंगे। Arib has left for her secret meeting. I must hurry. The letter commanded a Thalab to leave the garden and follow the mouse. Perhaps Arib is not lost to me yet. तो पोएट अरीब अपने सीक्रेट मीटिंग के लिए चली गई और लेटर में लिखा हुआ था कि ये चूहे को फॉलो करो। How far will the fox flee? तो ये चूहा कम खरगोश ज्यादा लग रहा है, लेकिन जो भी है, तो ऐसी पेंटिंग जहाँ दीवार पे बनी हुई है उसको बस फॉलो करते रहना है। तो अरीब की सीक्रेट मीटिंग पे अपन भी पहुंच जाएंगे। और ये पोएट अरीब का नाम भी एल करके, जो कि ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के मेंबर का नाम ऐसा रहता है, तो ये भी कहीं उसी ऑर्डर के मेंबर या ये हेड तो नहीं है। Yet another painted mouse. Another crumb to follow.
I am growing tired of this chase. तो बासिम थक रहा है इस निशान को फॉलो करते करते, लेकिन ठीक है। Men have forgotten how to I like mine. What do you? अच्छा, यहाँ पर खुफिया मीटिंग चल रही है अरीब और किसी की। You should bring him before the Mathalim court. But he thinks only of my reputation, Sarah. To safeguard success, I must be palatable, discreet. He fears I am too proud. You? Never. I write that love is feral and free, unbound by strict hero statute. Should I not practice what I publish? Practice makes perfect. It also makes enemies. So be it. But let me choose them. Courtiers, caliphs, patrons, partners. So many men have tried to decide my enemies. And friends. Though Allah knows I once chose poorly. He hid himself well. And the poet needs patrons. Even one so great as Al-Talab. Well, I have my pick. Good. There's troubled times ahead. I will be fine. I have survived 6 caliphs. I will survive 6 more. Don't worry, Sarah. I'll kiss the rings I need to kiss, but I will not be bound again. Not by anyone. तो पोएट अरीब की बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऑर्डर की एक मेंबर है। Secret meetings, coded names. There is no trace of the order here. Still, she has her pick of patrons. Maybe the head of the order is not Harib herself, but an admirer. I have seen enough from my 3 suspects. Time to seek Roshan's counsel and end this once and for all. तो बासिम बोल रहा है कि सीक्रेट मीटिंग कर रही है, अपना कोड नाम भी रखा हुआ है अरीब ने, लेकिन ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। पर ये जो ऑर्डर का हेड है वो हो सकता है कि पोएट अरीब को पसंद करता हो। तो तीनों को इन्वेस्टिगेट कर लिया और इस मिशन का क्या नाम है, वन फाइनल काउंसिल। तो इन सब बारे में जाके मास्टर रुशान को बताना है, उनकी एडवाइस लेनी है और वो बताएंगी कि आगे क्या करना है। और बासिम यही सोच रहा है कि अब इसको खत्म करने का टाइम आ गया है, यानी कि हेड ऑफ द ऑर्डर को मारेंगे और अब खत्म, गेम खत्म होने वाला है। लेकिन ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स को क्या चाहिए था और इससे बासिम का क्या लेना देना है, जिनका क्या हुआ कुछ अभी तक पता नहीं है। और अभी मतलब कहानी बहुत बची हुई है तो ये सोचना गलत है कि गेम खत्म होने वाला है। तो फेल आर्मी शायद ऐसा हो सकता है कि ये लास्ट मिशन हो। वैसे आप लोगों को पता होगा, वीडियो की लेंथ देखकर आपको समझ में आ गया, अगर 10-15 मिनट में खत्म हो रही है वीडियो यानी कि ये लास्ट मिशन है, और अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि बहुत कुछ बाकी है, पता नहीं। Basim, have you investigated your 3? You appear decided, Basim. What have you learned? Arib is innocent. The governor less so. He made a deal with the Order and removed his cousin's protection from Alamut. Tabban. Just as we had feared. We've been bare to our enemies. Yes. In exchange for Abu Abdullah's renouncing his claim to the throne. He cedes his crown to suit the Order, led by his mother. Qabiha is the head of the snake. Where is she now? Fled to the palace. If we act now, we can spare Alamut. Give me the feather, master.
Qabiha will meet swift justice, and I will be the one to deliver it. What? What are you saying? That a more seasoned hand is needed. The last time you entered a palace, you left it in disarray, to put it lightly. Have I not proven myself since? Master, I have earned the right. Earned what? The right to kill? No, that is not. A blow from one of us is a blow for all of us. Or does your ego demand the honor? It is not ego, Master. It is duty. I took an oath to leave my life behind, to walk the shadows and to serve the light. I mean to. Qabiha is more dangerous than her underlings. Strike quickly and end this. Do not hesitate. Blood from a stone. Who is she to keep you from Qabiha, or to tell you when to strike? My master and mentor, without whom I would be nothing but a corpse in the streets of Anbar. You spy on me now? Always. So you will swallow your questions, strike at her enemies, serve without complaint. And live your life dogged by El Jinni in the hovel you once hoped to escape. You know where to find me when your duty is done. तो ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के हेड अबू की माँ कबिया है और सिर्फ एलिमेंट पे कब्जा करने के लिए ना कबिया ने अबू को बोला कि तुम अपनी गद्दी जाने दो, तब गवर्नर ताहिर अपने कजन को बोलकर वहां से अपनी प्रोटेक्शन हटवा लेगा। So many dead or disappeared. And each trail of blood leads back to you, Al-Bahamut, the last mask to be lifted. You set Wasif on the rebels, unleashed Al-Ghul, sold your son's crown to seize Alamut. And all for what? Some worthless token of a long-forgotten age. No matter. I will see you at the palace, and I will cut the head from the snake. तो बासिम इस पे पूरा भड़क रहा है कि तुमने रेबल्स के ऊपर हमला करवाया, पब्लिक को इतना परेशान करवा के अपने दूसरे ऑर्डर मेंबर से पैसा छीना, इतने लोगों का खून करवाया और अपने बेटे की गद्दी तक जाने दी सिर्फ एलिमेंट पे कब्जा करने के लिए। और ये इतना सब किया बस इसलिए ताकि प्राचीन जमाने की कुछ बेकार सी चीजें उठा सको। तो इसलिए अब टाइम आ गया कि तुम्हें मार के ये ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स को जड़ से उखाड़ दिया जाए। अच्छा, मास्टर रोशान ये नहीं चाह रही थी कि बासिम अंदर जाए पैलेस में कबिया को मारने के लिए, क्योंकि मास्टर रोशान का कहना है कि ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा मतलब तेज औरत है। और ये बासिम को याद दिला रही थी कि लास्ट टाइम जब तुम महल के अंदर गए थे तो याद है कैसे तुम भागते हुए और मरते मरते बचे थे, और अगर तुम कबिया को मारने में चूक गए तो एलिमेंट पे हमला होगा और जितने भी हिडन वंस है सबकी जान भी जा सकती है। इसलिए मास्टर रोशान का कहना था कि मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं जाके मारूंगी, तुम अपने ईगो को थोड़ा कम करो। एक मिनट रुको, पहले इनकीडू को बुलाते हैं। Nothing can hide from us, Enkidu. तो बासिम ने मास्टर रोशान को बोला कि ये मेरा ईगो नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है जिसका मैंने कसम खाई थी और ये ड्यूटी को मैं पूरा करना चाहता हूँ। यहाँ क्या चल रहा है भाई? अली के आदमियों ने अटैक कर दिया है क्या? तो महल में दो और इम्पोर्टेंट चीज है, उसको भी देख लेते हैं। और मास्टर रोशान ने ये सब बातें सुन के कबिया को मारने की परमिशन दे दी और बोला कि देखो वो बहुत ही तेज है, इसलिए उसको जैसे ही देखो तुरंत मार देना, सोचना भी मत मारने से पहले। और पता नहीं निहाल भी कैसे फॉलो करते हुए पहुंच गई बासिम को। तो बासिम ने बोला कि तुम मेरी अब जासूसी करने लगी हो। तो निहाल ने बोला कि मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करूंगी, ठीक है। और ये क्या बात हुई कि मतलब वो कौन होती है तुम्हें कबिया को मारने से रोकने वाली? तो बासिम ने बोला कि वो अगर नहीं ना होती तो मैं अभी सड़क पर मरा हुआ रहता, वो मेरी मास्टर है और मेंटोर है। तो निहाल ने बोला कि हाँ, तुम्हारे जो भी सवाल है उसका घुट बना के पी जाओ और जो वो लोग बोले चुपचाप करते रहो, ये माँ कसम निशान जी। और निहाल ने बोला कि एक बार तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो आके मिलना मुझसे। फिलहाल महल के अंदर घुसते हैं और ये जो ऑर्डर की हेड है भाई देख लो भाई साहब, सबसे खतरनाक यही लग रहा है। हाँ, पूरा एक बार देख लो, इतने सारे मिशंस किए हैं और वो सब निहाल का ये सब साइड मिशन था। जो मेन मिशन है सब कर लिया है। ऑर्डर की हेड रिवील हो चुकी है, कबिया मारा जाए महल में घुसकर। It seems Ali decided to attack the palace after all. His rebels could distract these guards. You, hidden one! You think you can help us pass these gates? They're barred from the inside. You appeared primed for a fight, brothers. I will see what I can do. तो अली ने अपने रेबल साथियों से न महल पे हमला करवा दिया है, पर ये लोग अंदर नहीं जा सकते। अगर मैंने गेट खोल दिया किसी तरह तो ये लोग अंदर आके गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और मेरा काम अंदर आसान हो जाएगा।
I must be quick and quiet. Qabiha will be on her guard. तो कबिया ये बात तो जानती है कि उसको कोई मारने आ रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना सब कबिया ने तामझाम किया, अपने बेटे का गद्दी तक छुड़वा दिया एलिमेंट पे सिर्फ हमला करने के लिए। ऐसी हिडन वन से क्या दुश्मनी है इनकी? अच्छा वो सब बाद में सोचेंगे, पहले गेट खोल देते हैं ताकि जो रेबल्स है वो हमला कर सके गार्ड्स के ऊपर। तो रेबल्स को अंदर बुलाया जाए अब। Chaos be my friend. Mask my steps. अच्छा गेम ऑफ थ्रोन्स एक टीवी सीरीज है जिसकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, Chaos is a ladder। हाँ, तो जितना यहाँ पे गड़बड़ी होगा, जितना तमाशा होगा, वो मेरे लिए एक तरह से सीढ़ी है अंदर जाने की। बस ये रेबल्स को और अंदर लेके जाना है ताकि ये गार्ड्स को बिजी रख सकें। तो गाना बजाने वाले को अगर टोकन दे देते हैं ना, तो वो गार्ड्स का ध्यान भटका के रखेगा, मैं अंदर जा सकता हूँ फिर। Some music would brighten the day. Wonderful playing. Ahlan, Saidi. I'm afraid you are early. I am still warming up. I think you are warmed up enough to play for those guards. Perhaps, but not for free. Here you are. Thank you for supporting the arts. Let us hope this clears the gate. तो अच्छे गार्ड्स जाके गाना सुनो। अरे कौन देख रहा है? अगर इसने देख लिया ना, फिर तो सबको मारना ही पड़ेगा। Was here. Sure, I'll see you again. Wait! तो गार्ड्स उधर बिजी है, लेकिन एक गार्ड गाना सुनने गया नहीं। अच्छा यहाँ पर ना मेरे मतलब का एक और आदमी, उससे भी बात करते हैं। Servants go where they will. This man might help me open some doors. Such heaviness in the air today. These are treacherous times. And most inhospitable. Are we not bade to honor the guest as he is entitled? We are, but Al-Mutawakkil was murdered in his winter palace. Security has increased here since. I can see that. Everywhere I go, I am met with dark looks and locked doors. तो ये काम करने वाला है, इसके पास सारी चाबियां होंगी, इसको रिश्वत देते हैं, इससे चाबी लेते हैं। If only this were enough to open them. If only. अच्छा 3 और टोकन चाहिए। An open door is a priceless thing. तो अच्छा मेरे पास 3 टोकन और थे, वरना घुसने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ता। ये अब सारे दरवाजे खोल देगा मेरे लिए। This will throw open all doors. I hope your visit improves. I feel a change in the air already. Finally. Now to find Qabiha and save Alamut. तो उस आदमी ने यहाँ की मास्टर की दे दी है। चलो बहुत बढ़िया। और अब कबिया को ढूंढ के मारना और एलिमेंट को बचाना है।
rebels are at the gate. तो गेट खोलते हुए इन्होंने मुझे देख लिया है, लेकिन रेबल्स भी पीछे से आ रहे हैं। अच्छा, पैलेस के अंदर आने के बाद भी ये नहीं पता है कि कबिया कहाँ छुपी हुई है। ओ, इस गार्ड के पास चाबी है। ये ऑब्वियसली वही चाबी होगी जहां कबिया छुपी हुई, इससे चाबी छीननी पड़ेगी। अच्छा, वो जो रिबल्स वहाँ हॉल में लड़ रहे हैं, ना तो ये गार्ड्स उनसे लड़ने जा रहे हैं, ना ये रिबल्स इनको मारने आ रहे। भाई तुम लोग वहां जाके मारो ना, 4-5 गार्ड्स वहीं पे खड़े हुए हैं। ये लोग नहीं आ रहे भाई, लगता है सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। Hold on. Down with it. Hold his thumb. अच्छा, वो जो गार्ड था उससे चाबी उठा लिए। अच्छा, उठा ही लिए। अरे ये मत बोलना ये दरवाजा बंद है। इस दरवाजे के अंदर कुछ काम का एक कबिया इसके अंदर हो सकती है, या वो कहाँ छुपी हुई ये पता चल सकता है। अच्छा, इसको अगर मैं जला देता हूँ तो सारे गार्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन क्या जरूरत है। अभी वो लोग अपना बिजी है तो बिजी रहने दो। जब तक मेरी नजर में नहीं आ रहे तब तक तेल लेने गए। तो ऐसा है ना कि उस गेट में बाहर से जाने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, अंदर से एक बार जाके चेक करते हैं। अच्छा, ऊपर जाने का रास्ता खुला हुआ है ना, यहां से पक्का कुछ मिलेगा कबिया के बारे में। It was necessary. अच्छा, जो लोग नीचे खड़े वो रेबल्स हैं क्या? तो ये गार्ड्स उनको देख क्यों नहीं रहे थे? तो महल में काम करने वाले इतने लोग हैं और यहाँ पर एक काम के लिए मकीरा है। Well, we have to stop meeting like this. I could not agree more. Where is Kabiha? If I knew, I would not tell you. Do not play the fool, Makira. Why not? It worked the last time. Do you know what Kabiha is? What she really is? More than anyone. I am more child to her than her own son. That fool who let his father die before his eyes. You have no idea who you are dealing with. But I do. And I say to you kindly, leave this place. तो ये मकीरा एक नंबर की चमची है कबिया की, ये तो कभी नहीं बताने वाली उसके बारे में, लेकिन इससे दूर जाना है मुझे। Makira will warn her mistress. Let us see where she leads. As you were. तो ये मकीरा जाके कबिया को वॉर्न करेगी कि देखो मारने आया है तुमको बासिम, तो इसको फॉलो करना है, यही पहुंचाएगी कबिया तक। और ये बोल रही थी कि कबिया के बेटे से ज्यादा मैं उनकी अपनी बेटी हूँ, और तुमको नहीं पता है बासिम तुम किससे पंगा ले रहे हो, इसलिए मैं यही वार्निंग दे रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। यही मकीरा कबिया की मौत का कारण बनने वाली है। तो इसको ज्यादा दूर जाने नहीं देना है, लेकिन ऐसा भी नहीं आना है कि ये मुझे देख ले।
They are waiting for me back home, dear Bakr. अच्छा, जिस कमरे में ये जा रही उसी में लगता है कबिया है। The library. Qabiha must be within. Lanatullahi alayk. Can you not leave me alone? You, gladly. But your mistress. Do what you will. You will not find her. I have nothing more to say to you. There must be a room beyond this one. But how to reach it? तो अब यहाँ से कबिया का हिडन रूम खोजना है। What was it? Many volumes by Arif. Qabiha is an admirer. Blue, black, white, and yellow tomes. और ये लानत भेज रही थी मकीरा कि मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम ऐसे बोलते हैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, लेकिन कबिया को अकेले नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं कहाँ अपने हिडन चेम्बर छुपा के रखा है, उसको खोजना है। अच्छा, अरीफ की पोयम में ना 4 वर्ड्स बहुत ज्यादा है। ओशियन, डेजर्ट, कोबरा और डव। तो इन चारों का कुछ तो काम है हिडन चेम्बर्स ढूंढने में। Which book would Qabiha choose to mark her path? She had Arib's book in her office. तो यहाँ पर सही बुक रखने से ये हिडन चेम्बर मिलेगा। ओशियन यानी कि ब्लू, तो ब्लू बुक यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो पोइट अरीब को कबिया भी बहुत पसंद करती है, तो हो सकता है उसी के पोयम से इसने अपना ये पासवर्ड रखा हो एक तरह से। डेजर्ट का कलर है येलो, यानी कि येलो बुक यहाँ पे रखेंगे। तो डेजर्ट के बाद एक कोबरा, तो कोबरा का कलर ब्लैक, ब्लैक बुक। अच्छा, मेरे पास एक अरीब की भी बुक है, उसका भी कुछ काम है। ऐसे लास्ट वाला वर्ड था डव, और डव का कलर होता है व्हाइट, तो व्हाइट बुक यहाँ रखते हैं। और अगर एक और बुक रखना पड़ा तो अरीब की किताब काम आएगी उसमें। Someone took great effort to hide this place. अच्छा, मकीरा ने देखा नहीं कि बासिम ने सॉल्व कर लिया है पजल, तो कबिया को अब मार के खत्म किया जाए गेम। Hidden one. अच्छा, ये कबिया पहचान गई बासिम को, और ये पहली टारगेट है जो भागने लगी, वो भी कुछ ज्यादा ही तेज। So many years spent searching, combing ancient tomes and tombs, tracing forgotten histories, snatching at rumor and at myth. When all I needed to do was wait for you to come to me. ये बोल रही है कि इतना मैंने टाइम इधर उधर वेस्ट किया, मुझे बस इंतजार करना चाहिए था तुम्हारा मेरे तक पहुंचने का। Our prodigal scion has arrived. Yet he knows not what he is. Have you not wondered at your nature? You, who see more, who know more. Even my son knew to ask what you were. When he saw your hand touch and wake the ancient's gift. What am I? Something more than man. Enough riddles. Speak plainly. Why speak what can be shown? Come with me to Alamut. Beneath its temple walls lies all the knowledge that you are heir to. Your so-called brothers would sooner die than see you claim it. But take heart, Basim. We will prepare the way and set you free. No! मार दिया इसको भाई, बताने तो देता कौन है।
often have you laughed at her lips? She said I was something more than man. What did she mean, Roshan? What lies beneath the temple? That is forbidden ground. There's nothing there for you. I told you of the nightmares. The jinni. You called it weakness. Told me to mend it. I tried and tried, but you hid the way. You let me struggle alone! Not alone! You are not the first to walk the shadows broken, Basim. Stitch your shattered pieces into a whole. Pour your pain into the Brotherhood. Purge yourself of the poison she dripped, and come home to us. No more than a man, but no less than our brother. Or is it too little for you? What if it is? Follow the path she laid out for you, and I will kill you myself. भाई माँ कसम ये गुरु ऐसा बोल के चला जाए कि अगर कबिया के बताए हुए रास्ते पे तुम गए बासिम तो तुम्हें मैं खुद से मारूंगी। ये एक तरह से ओपन धमकी देके जा चुकी है बासिम को। I have to get out of here. I have to tell Nihal what I have learned. तो बहुत सारी बातें यहाँ से निकल के सबको निहाल को बताना है। Guard! Guard! To me! Hey, here goes! Who killed that? तो अबू को तो यही लगता है कि इसके पापा को भी बासिम ने मारा है, तो अब ये यही सोच रहा होगा कि इसकी माँ को भी बासिम ने मार दिया और एक बार फिर से अबू के कहने पे गार्ड्स ने हमला कर दिया और पहले से एक बार फिर से हम लोग भाग रहे हैं। ये डेजा वू हो रहा है, लेकिन इस बार हिडन वन बन के भाग रहे हैं भाई। और पहले यहाँ से जिंदा निकलते हैं, उसके बाद ये सब जो इन्फॉर्मेशन मिली अचानक से सबके बारे में बात करेंगे। Get this bungle off me! Alhamdulillah. Again, I have escaped with my life and left things broken behind me. अच्छा महल से निकल के भाग गया। अब जाके निहाल को बताना है कि अपने को क्या पता चला है। तो कबिया बोलने लगी कि मैं इतना टाइम इधर उधर वेस्ट किया मैंने नॉलेज ढूंढने में और क्या उससे अच्छा मुझे बस इतना वेट करना चाहिए था कि तुम मुझ तक पहुंच जाओ। और वो बासिम को देख के बोलने लगी कि हमारा खास आदमी आ गया है जिसको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक आम इंसान है, लेकिन उसे सब पता होते हुए भी वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा है। और जब मेरे बेटे ने देखा था तुम्हें उस प्राचीन चीज पर हाथ रख के उसको एक्टिवेट करते हुए, तब मेरे बेटे ने भी तुम्हारे बारे में पूछ लिया था कि तुम कौन हो, आम इंसान तो तुम नहीं हो। तो बासिम बोलने लगे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? तब पहेलियां मत बुझाओ, सीधा सीधा बताओ कि क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि बताने से अच्छा है कि एलिमेंट के नीचे जो टेम्पल है ना, वहाँ तुम्हारे सारे सवाल के जवाब है, तो तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें सब दिखा दूंगी कि तुम कौन हो और क्या हो, सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन मास्टर रोशान ने कबिया को मार दिया और बासिम पूछने लगे कि एलिमेंट के टेम्पल में ऐसा है क्या, मुझे जाना है वहाँ। तो रोशान ने बोल दिया कि वहाँ जाना साफ साफ मना है, तुम नहीं जा सकते। The earth has shifted beneath my feet. I need to get back to firmer ground. I need home. I need Nihal. तो बासिम के पांव के नीचे जैसे जमीन खिसक गई हो, ये पता चल गई कि ये आम आदमी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बात मास्टर रोशान को ही पता थी, क्योंकि उन्होंने उस डिवाइस को एक्टिवेट करते हुए देखा था बासिम को, और इसलिए उन्होंने इसको ट्रेन किया ताकि वो हिडन वंस में आ जाए, ना कि ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के पास चला जाए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि मास्टर रोशान को ये पता था कि ये जो जिन है ये कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन ये बासिम को बार बार झूठ बोलती रही कि ये जिन सिर्फ तुम्हारी कमजोरी है, इसको दूर करो। और मास्टर रोशान बोल रही थी कि तुम हमारे भाई बनकर हमारे ग्रुप में वापस आ जाओ, और एलिमेंट के नीचे क्या है ये सब जानना तुम बंद कर दो, ये सब सवाल पीछे छोड़ दो। और फिर उन्होंने पूछा कि इतना तुम्हारे लिए कम है क्या, और इसलिए उन्होंने धमकी दे दी कि अगर उस रास्ते पे गए तो मैं तुम्हें खुद मारूंगा। The Shorta watch my every move. If only someone could draw their gaze. Breathe easy, friend. You have nothing to fear. Damn you! इस खलीफा के मैसेंजर को अभी पैसा देकर मतलब वांटेड लेवल 0 करवाया था, फिर इस गार्ड ने क्यों देखा
अभी तो बस मैं ऊपर से चढ़ के जा रहा था। चलो ठीक है, निहाल से जाके मिलते हैं, जो भी पता चला उसको बताते हैं। और मास्टर रोशान अब विलन बन गई, यानी कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। और हो सकता है कि उनके साथ जो फाइट अधूरी रह गई थी स्टार्टिंग में, याद है ना, वो अब पूरी करने का टाइम आ गया है। और जितने भी सवाल है बैसिम के सबके जवाब एलिमेंट में मिलेंगे। ओ भाई साहब, ये क्या बात हुई? अच्छा, ये जो शक का मीटर बना हुआ है गार्ड्स का, ये खत्म होगा तब मैं अंदर जा सकता हूँ। वेट करना होगा। ये ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स को मारते मारते कहानी क्या खतरनाक टाइप से शिफ्ट हो गई है। इसीलिए ना असैसिन्स क्रीड की गेम में यही होता है, धीरे 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 और उसके बाद कुछ बड़ा धमाका। मजा आ रहा है अब। Basim, are you well? Basim. I do not know. You were right, Nihal. My enemy, Qabiha, she held the answers. What did you learn? That there is more to who I am. A truth Qabiha tried to tell me. A truth my master sought to silence. That truth lies at Alamut. So we ride for Alamut. तो बासिम निहाल को बोल रहा है कि तुम ठीक बोल रही थी, मेरे दुश्मनों के पास जवाब था। और कभिया मुझे बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं इंसान नहीं बल्कि इंसान से बहुत ज्यादा हूँ। और इसने बताया कि एलिमेंट में सारी सच्चाई है। तो अब बगदाद छोड़कर एलिमेंट जाने का टाइम आ गया है। चलो फिर। I will go, Nihal. I alone. You need me. I need you safe. I am safe with you, and you with me. I may find nothing there but danger and death. This is my fate. I will not turn back from it, but neither will I have you face it. Where you go, there I will go. Where you rest, there I will rest. I will walk behind you every step of the way. You are never alone. Now get packing. We will not leave Alamut until you have found the answers you seek. तो बासिम नहीं चाहता था कि निहाल एलिमेंट में साथ में आए, क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा खतरा है। लेकिन निहाल ने बोल दिया कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और एलिमेंट से हम लोग तब तक नहीं लौटेंगे जब तक जो सारे सवाल के जवाब है तुमको मिल नहीं जाते। अच्छा, पानी भी खत्म हो गया। ओ भाई साहब, हेडनमैन को मारा जा रहा है। मास्टर रोशान थी क्या? मुझे नहीं लगता। ना ना ना, उन्होंने तो बोल दिया था कि अगर इस रास्ते पे चले जो कि चल रहा है बासिम, तो वो खुद मारेंगे। क्या चाहिए इस जिन को? Noor? Not the welcome you were expecting, eh? Well, at least you had the fortune to be elsewhere when the Tahirids came for us. What happened? I fear Alamut has fallen. I was tasked with finding help. I went into the desert to find other patrols. Then I found you. Were there others with me? No. Only you. Then Nihal lives. And Roshan? I had hoped she would be with you. Come, brother.
We must head out, find any survivors, and cleanse Alamut of its infestation. I fear I cannot. How bad? I will make every last one of them pay. Vengeance is not our way, brother. Our way? You sit bleeding to death and still cling to this foolish dogma. And for what? Our creed could not protect Alamut. And neither could I. Nor I. But our beliefs are why you still draw breath. And are why you must save any of us who may yet live. On that we can agree. You have my word. Waffaqak Allah, Basim. There is nothing left to say, brother. Go. Save who you can. तो मास्टर रोशान ने नहीं बचाया था, नूर ने बचाया था और इसने बताया कि यहाँ पर हमला हो चुका है और अब बासिम को जाके सबको बचाना पड़ेगा। Steady. Steady, girl. All is well. All is well. Your master left you in my care. Our temple, whatever lies beneath, I must see it for myself, no matter the cost. तो सबको बचाना है और साथ में जो राज है वो भी सब जानने हैं। All this blood and death, is this what Qabiha meant by preparing the way? Nihal, please be safe, wherever you are. तो जब नूर ने बचाया ना बासिम को, तो निहाल को उसने वहां पे नहीं देखा था, यानी कि वो जहां भी ये सेफ है और वो वहां से बच के भाग गई थी। Ya Ilahi. No way through, except maybe up. इस जगह पे ट्रेनिंग ली थी, क्या हाल कर दिया है यहाँ का। और कबिया ने बासिम को बोला था कि तुम्हारे लिए हम रास्ता तैयार कर देंगे, तुम एलिमेंट के नीचे जाना और जो भी राज है सब पता चल जाएंगे तुम्हें। तो वही बासिम सोच रही है, कबिया सबको मार के मेरे लिए रास्ता तैयार करने वाली थी क्या? Some of my clan still live. Mentor Rayhan among them. अच्छा, मास्टर रोशान के बारे में बासिम ने पूछा, लेकिन नूर ने मास्टर रोशान को नहीं देखा है और अभी भी हिडन वन के कुछ लोग बचे हुए हैं, जिसमें मेंटोर रेहान भी है। तो उन लोगों को सबको बचाना पड़ेगा। और बासिम नूर से बोल रहा था कि एक एक चीज का मैं इन लोगों से बदला लूंगा। तो नूर बोलने लगे कि भाई ये हमारा तरीका नहीं है। तो बासिम अभी हिडन वंस के सारे तरीके भूल चुका है, लेकिन अपने क्लैन के लोगों को भूला नहीं, क्योंकि इसी तरीके की वजह से इसकी जान बची थी। तो इसलिए सारे मेंबर्स को बचाएगा। Got your back if anything is going on. Huh? Who's... What? You... What the... Right. Back to the border. तो अभी मेंटोर रेहान को तो हम लोग बचाएंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मास्टर रोशान कहाँ है, क्योंकि जो उन्होंने काम करने से मना किया था वो बासिम अभी करने ही जा रहा है। For all your reputation, I must say, I expected a far stronger response to our presence. Mentor, they call you. Is that so? Hey, hold on. You catch that, shit I will kill you! तो सबको आजाद किया जाए और फिर अंदर चलते हैं। Basim, how? I thought you were in Baghdad. Where are the others? Roshan? I came alone, for the same reason these men did. I know the truth, Mentor, about the temple and what it shelters. Our enemies told me as much. They urged me to seek it,
because only I could. You? Thus the Order used the Tahirids to decimate Alamut, because you are their key. To what? What are you protecting that is worth all this bloodshed? Ancient ground. For generations, it has been our duty to watch over it. Defend it from the Order, who seek to exploit its secrets. The temple houses its entrance, but Basim, even though it is forbidden, I have searched. There is no means to access it. Then I will find a way myself. You must not. It is what the Order wants, don't you see? If what we protect should fall into the wrong hands, it will fall into mine. Look around you, at what the Order is prepared to unleash upon us. If I can gain the knowledge they seek, it can be what finally gives us an edge in this endless war. This is the way forward. For the hidden ones. तो मास्टर रोशान ने तो अंदर जाने से मना किया था, लेकिन मेंटोर रेयान तैयार हो गए कि मैं अंदर जा सकता हूँ और ये मास्टर रोशान के भी ऊपर है, तो इन्होंने बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और बासिम इनसे पूछा था कि आप लोग ऐसा क्या छुपाने की कोशिश करो, 1 मिनट रुको। I want to talk to you. You die now. कौन बचा हुआ है भाई, मर जा तू भी। One slip. तो वैसे मेंटोर रेयान से पूछ रहा था कि अंदर ऐसा क्या है जो आप लोग बचाने के लिए इतना खून खराबा भी सहने के लिए तैयार हो। तो रेयान बताने लगी कि देखो ये हिडन वंस की सदियों से जिम्मेदारी है कि अंदर जो प्राचीन जमीन है ना उसको हम लोग बचा के रखें, ताकि वहां पर कोई गलत लोग आकर उसकी पावर को गलत तरीके से यूज करने की कोशिश ना करें। और मेंटोर रेयान ने बोला कि देखो भले ही अंदर जाना मना है, लेकिन मैंने अंदर जाके देखा वो प्राचीन जमीन को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये मुझे पता ही नहीं चला। तो वैसे हम लोग बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। The temple. Let us finish this. Nothing and no one shall get in my way. Not now, not when I am this close. तो वैसे अब कुछ ज्यादा गुस्से में आते जा रहा है कि जब मैं जवाब के इतने नजदीक हूँ तो अब कुछ भी और कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता है। और मेंटोर रेयान वार्न कर रहे थे बासिम को कि देखो उस जमीन को एक्सेस मत करो, क्योंकि ऑर्डर यही चाहता है। तो बासिम ने बोला कि आप नहीं समझ रहे हो, अगर मैं उस जमीन को एक्सेस कर लेता हूँ तो ये ऑर्डर और हिडन वंस की जो इतने टाइम से जंग चले आ रही है ना, इसमें एडवांटेज हमारे हाथ में आ जाएगा। इसलिए आगे बढ़ने के लिए यही सही रास्ता है हिडन वंस के लिए। It will take more than you to stop me. बासिम इसको मारने के बाद बोल रहा है कि तुम एक अकेले से मैं नहीं रुकने वाला। More of them ahead. Suffice to say, I am on the right path. अच्छा याद है ना, बासिम ने हिडन वन बनने से पहले यहीं पर कसम खाई थी और उंगली भी काटी थी यहीं पर। तो अभी यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं ना सबको मारना पड़ेगा पहले। Were to secure the temple, not to enter it. I know. Damn the orders! You saw what we fought them to get here. The men we've lost. You think what? Yeah! You think we will be rewarded? Of course not. Whatever it is they want in here, it must be worth a fortune. Think of all the land you could buy and the Rest now. Shut up! Just find it quickly. We will all think a lot more clearly without you two bickering like a pair of idiots. तो इन सोल्जर्स ने अपने मास्टर को धोखा दे दिया, बोला कि एक बार मास्टर्स को जो मिल जाएगा फिर वो हमें पैसा थोड़ी देंगे, इसलिए जो भी ऑर्डर मिला है हमें लाने के लिए वो हम खुद ही रख लेते हैं। और ये लोग उसको ढूंढ रहे हैं, यानी कि प्राचीन जमीन को, जो कि इनको तो मिलेगी नहीं, पहले इनको मार देते हैं। What these intruders could not. अच्छा तो अब वो ढूंढ के निकालना है जो इन लोगों को नहीं मिला, और ये पता करना है कि वो प्राचीन जमीन तक हम लोग कैसे जा सकते हैं।
Beneath its temple walls, Qabiha said. Beneath its temple walls. Where to be? What magic is this? Wait. I know this symbol. ये निशानी वही है जो डिवाइस के ऊपर बनी हुई थी। सिंबल को छूकर एक्सेस कर लिया है प्राचीन जमीन को बासिम ने। भाई साहब, I warned you what would happen. Last chance. मास्टर रोशान बिल्कुल सही टाइम पे आ गई फाइनल बॉस फाइट के लिए। चलो ठीक है, गुरु को बताते हैं कि गुरु कौन बन गया अब। Very well. So it has come to this. Killing each other. Is this your idea of a brotherhood? The Brotherhood is unified. There is no place for those who would set themselves above it. Is that what you think I am doing? Wake up, Basim. You walk the Order's path. The very people you sword. तो ऐसा है ना मास्टर रोशान, बात करने का टाइम था। Last chance. अब बासिम आखिरी मौका दे रहा है। गुरुजी निकल लो, अभी भी टाइम है। बासिम मारना नहीं चाहता, लेकिन अब कोई ऑप्शन भी है नहीं। I trusted you. I gave you everything I had, and you lied to me. You knew. Since the night we fled Anbar, you knew my truth. I only feared what it could spell, but I set my worries aside. I had to. You were but a young man. अच्छा, वो मारा नहीं बासिम ने क्योंकि है गुरु ना, लेकिन इतना इंजर्ड कर दिया कि ये पीछा नहीं करे। अच्छा, बासिम इनको बोल रहा था कि आप सारी सच्चाई मेरी जानती थी कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। और अभी हार मानने बोल रहा है कि हार मान जाइए चुपचाप से। Yield. Basim. Leave her. Come. I never wanted this. But I need to know. I do not want to lose you to what you may find in there. You do not have to look to the past to know who you are, who you can be. You can choose, Basim. Put your faith in me. I tried. And in the end, you thought it best to control me. No different than our enemies. Basim. Over here. तो ये अभी बासिम को समझाने की कोशिश कर रही है कि अतीत को जानकर तुमको ये पता करने की जरूरत नहीं है तुम कौन हो, तुम अपना यकीन मेरे ऊपर रखो। तो बासिम ने बोला मैंने कोशिश तो की, लेकिन आपने भी लास्ट में क्या किया, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की। I know what this is. एक सेकंड, निहाल को कैसे पता कि ये क्या है? कहीं निहाल भी तो ऑर्डर की मेंबर नहीं है? The key. तो इस प्राचीन जमीन को एक्सेस करने के लिए बासिम इसलिए की है क्योंकि उसका खून ही मतलब इसकी चाबी है इस दरवाजे को खोलने के लिए। She will follow. No, she cannot. You saw it yourself. निहाल बोल रही थी कि मास्टर रोशान फॉलो करते हुए आ जाएंगी, तो बासिम ने बोला कि नहीं, अब वो फॉलो नहीं कर पाएंगी। तुमने देखा ना, वो इंजर्ड है। More of those objects. I wonder what truths lie within. What stories they serve to tell. Whatever lies within
carries grave importance. For the hidden ones, for the order of the ancients. For me, what have we walked into? Where has my path brought us? You do not want to know why anyone was brought to this place. तो जो भी राज है बस उससे पर्दा उठने ही वाला है. Are my eyes deceiving me? Are you seeing this? Nihal? I am here. Wherever we are, it was built long ago. To serve what purpose, I do not know. I do. How? I do not know. Nihal, you are worrying me. तो बासिम बोल रहा है कि मेरी आंख मुझे धोखा दे रही है. ये कैसी जगह है? और ये जो भी जगह है ये बहुत सदियों पहले बनी थी किसी खास मकसद के लिए. और पता नहीं कैसे लेकिन निहाल को इस जगह के बारे में सब पता है. Look in here. और निहाल भी नहीं जानती कि उसको इस जगह के बारे में कैसे पता है. लेकिन बासिम को टेंशन हो रही है. और एक और दरवाजा, इसके पीछे सारे राज हैं. This place. Nihal? इस जगह को जानता है बासिम. निहाल भी गायब हो गई है. क्या हो रहा है ये? Cannot be. भाई साहब इसके अंदर कैसे आ गई है? माँ कसम निहाल तो इसके अंदर थी. मतलब निहाल जो भी अभी हम लोग देख रहे थे निहाल थी ही नहीं. बासिम सिर्फ उसको इमेजिन कर रहा था. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I will walk behind every step of the way. निहाल कहीं थी नहीं. खलीफा को भी इसी ने मारा था बासिम ने. Enough! Let me out of here! How? What are you? Look! See for yourself! क्या हो रहा है भाई ये सब? निहाल अंदर थी अब दिखा रही है कि निहाल है क्या. Show yourself! You dare to hide from me now? After all you have put me through? Where are you? तो वो जो डिवाइस से हमने मेमोरी देखी थी ना, वो एक्चुअली पुरानी मेमोरी थी बासिम की. और बासिम अब जिन को बुला रहा है कि अपनी शक्ल दिखाओ, इतना तुमने मुझे टॉर्चर किया है और अब तुम्हारी हिम्मत हो रही छुपने की. The genie in my dreams. The figure from these visions. They are one and the same. Is this what I have been seeing? The memories of a life long ago. Are they mine? Is that why the genie feels so real? My tormentor. The source of all that ails me. If this is so, then I must face you. तो
तो बासिम समझ गए कि ये डिवाइस की विजन इसकी कोई पुरानी जिंदगी की विजन्स हैं। और विजन्स में हमने देखा ना कि एक आदमी टॉर्चर कर रहा था बासिम को, और इसलिए ये जिन इतना रियल फील होता है बासिम को, क्योंकि जिसने इसको टॉर्चर किया था ना पुरानी जिंदगी में, उसी का प्रतीक है ये जिन, और इसलिए अपनी पुरानी जिंदगी के टॉर्चरर को फेस करना चाहता है बासिम। No. Why am I seeing this? अनबार में खलीफा के गार्ड्स ने नहीं मार दिया था इसके दोस्तों को, तो बासिम सोचा कि ये मुझे अभी क्यों नजर आ रहा है। This space. As I move through it, I see nothing but the memories that stir my soul. These moments of adversity is when I felt the jinni nearest. An unrelenting fear, paralyzing me in my weakest state. तो इस एरिया में बासिम को सिर्फ वो यादें नजर आ रही है ना जिसने इसकी रूह को झंझोड़ के रख दिया था, और जब इसे फील हो रहा था कि जिन इसको बस मारने आ गया है, वही सब यादें हैं यहाँ पर। I never understood what it was born of, or why it haunted me so. But I am beginning to remember. I am in a cold cell, begging for it all to stop. तो बासिम को इस जिन के बारे में समझ में आ रहा है कि ये कौन है। तो अपनी पुरानी जिंदगी में बासिम जेल के अंदर था और यही टॉर्चरर उसको जेल में बंद करके पूरा टॉर्चर करता था। Who I once was may seek retribution. But if I am to move beyond this pain, then what I want is peace. बासिम सोच रहा है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में जो भी था उसे बदला चाहिए होगा, लेकिन मुझे इस दर्द से आगे बढ़ना है, तो मुझे शांति चाहिए। It is time to put an end to this. तो इस जिन से छुटकारा पाने का टाइम आ गया है। तो बासिम की ओरिजिन स्टोरी में जानता हूँ, और बासिम अपनी पुरानी जिंदगी में और कोई नहीं बल्कि नॉर्स गॉड लोकी था, और लोकी को उसी के पापा यानी कि नॉर्स गॉड के किंग ओडिन टॉर्चर कर रहे थे। The cell. My cell. I am nearly there. No going back. इसी जेल में पुरानी जिंदगी में जब बासिम लोकी था तो उसको रख के टॉर्चर किया गया था, और बासिम को अगर इस जिन से छुटकारा चाहिए तो उसे अपने टॉर्चरर को माफ करना पड़ेगा। The jinni. I can hear it. तो जिन की आवाज नीचे से आ रही है। तो अब आप ये सोचोगे भाई कि लोकी का ये पुनर्जन्म कैसे हुआ बासिम। तो ये जो भी जगह देख रहे हो ना, ये वही नॉर्स गॉड ने बनाई थी जब उनको ऐसा लगा कि उनकी दुनिया खत्म होने वाली है, तो सबने अपना अपना पुनर्जन्म करवा लिया, ओडिन ने भी और लोकी ने भी, सबने। और वो जो डिवाइसेस थे ना उसमें अपनी याद छोड़ दी, ताकि जब इनका पुनर्जन्म वाला रूप आके उसको छुएगा तो उसमें जो भी ये लोग याद रखेंगे ना वो एक्टिवेट हो जाएगी। और लोकी ने अपनी ये टॉर्चर करने वाली याद को उसमें रखा हुआ था, क्योंकि लोकी चाहता था कि उसको ओडिन ने जो टॉर्चर किया वो फिर से जन्म लेके ओडिन से बदला ले। I know you now. I see you for what you are. A crippling memory from a past life. And that is where you will remain. जिनको बोल दिया कि तुम सिर्फ एक याद हो पुरानी जिंदगी की और तुम बस वही रहोगे, इसलिए अब जिन कभी नजर नहीं आएगा। It is over. No, Basim. It is only the beginning. For us. For what lies ahead. A deeper understanding of the world we left behind. And our place in it. All my life I wrestled with who I was. Who I was meant to be. And there you were. All this time. The side of me I resisted. A reflection of who we once were. Of who we shall be once more. There is so much that awaits us. A new world. Let me show you.
I will never see you again, will I? Will I be alone? You are never alone. जबरदस्त भाई साहब, कुछ ज्यादा ही खतरनाक एंडिंग निकली इसकी। How long has it been? तो निहाल और कुछ नहीं बल्कि बासिम की वही पुरानी जिंदगी की वो पुरानी याद थी। और बासिम बोल रहा था कि चलो ये फाइनली खत्म हुआ, लेकिन निहाल ने बोला कि नहीं बासिम, ये सिर्फ एक शुरुआत है और मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि कौन सी दुनिया हम छोड़ आए पीछे। और अब क्योंकि अपनी पुरानी याद को भी एक्सेप्ट कर लिया है बासिम ने, इसलिए अब निहाल उसको कभी नजर नहीं आई। इसलिए सपने में देखा ना कि दोनों अब एक हो गए। तो जो भी इसकी पुरानी जिंदगी की याद थी बासिम की, वो अब बासिम के अंदर आ चुकी है। तो एलिमेंट को फिर से इन लोगों ने बचा लिया है। हिडन वंस के लोग अभी भी बचे हुए हैं। It is done. You made your choice. Now I make mine. तो मेंटोर रेयान ने अंदर जाने की परमिशन दी थी, इसलिए इस बात से भड़की हुई मास्टर रोशान और वो अब हिडन वंस का ग्रुप छोड़कर जा रही हैं। बोल रही है कि आपने अपना डिसीजन ले लिया, अब मैं अपना लूंगी। Wadaan Roshan bint al-Ahad. It was an honor. Come, Basim. We have much to discuss. That we do, mentor. तो क्योंकि बासिम को अपनी पुरानी जिंदगी की याद यानी कि लोकी वाली याद मिल चुकी है, तो अब इसके तेवर देख रहे हो बदल गए। मेंटोर रेयान इसको बोल रहे थे कि बासिम आओ, अभी हमें बहुत कुछ बातें करनी है। तो बासिम एक तरह से ताना देते हुए बोल रहा है, हाँ क्यों नहीं मेंटोर। इन कीड़ों ने पंजा मार दिया। अच्छा ये पहचान गया कि ये अब मेरा पुराना वाला बासिम नहीं है। तो बासिम की पुरानी जिंदगी यानी कि लोकी की जिंदगी ने इसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है। This memory I buried of this place, this prison, the torture I suffered here, it festered for years, in darkness and dreams, masked as a jinni, to haunt me and hollow me, until it consumed my waking life. But I have faced my past, my pain, embraced it. I shed my skin once, in another time, another place. But I am whole again. I remember. And as for those who thought to bind me, should any of them still walk the earth, I so look forward to our reunion. But until that day, a new world awaits. तो बासिम ने बोल दिया कि मेरी पुरानी जिंदगी में जिन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया था ना, अगर उनमें से कोई इस दुनिया में घूम रहा है तो मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा उससे दोबारा मिलने का। यानी कि उसकी बैंड बजाएगा बासिम। और ये चीज हुआ है असैसिन्स क्रीड वलहला में, क्योंकि उसका जो मेन हीरो है ना वो ओडिन का रीइंकार्नेशन है। तो खतरनाक एंडिंग थी। जिसने पुराना गेम नहीं खेला है उसको थोड़ा सा नहीं समझ में आ सकता है। मैंने भी खेला नहीं एक्चुअली, उसकी कहानी देख ली क्योंकि गेम इतना लंबा है ना
150-200 घंटे की थी। तो फिलहाल रात के 1 बज गए, 4 घंटे के ऊपर का एपिसोड हो गया है। पता नहीं ये एपिसोड अपलोड होते होते कितना टाइम लगेगा, तो ठीक है। फिलहाल भी बहुत ज्यादा मेहनत लगी भाई। वीडियो को लाइक करना, नया हो तो भाई सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।